जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 12 और इसके अंदर हम लोग अपने 4 चैप्टर्स को देखेंगे। तो वो 4 चैप्टर्स कौन-कौन से हैं? द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, द ऑडिटिंग systems acquisition and development process, information security management and business continuity and disaster recovery। ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोगों का 40% कवर करेंगे, लाइक मीन 10% ईच। तो हम लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। और ये सारे हम लोगों ने करने हैं कंसाइज नोट से। इसके अंदर हम लोगों ने ये वाला चैप्टर नंबर 6 देखना है। इसके बाद हमारे पास एक गवर्नेंस वाला आएगा, वो हम लोगों ने सिर्फ कर देना है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑडिटिंग से। ऑडिट ऑडिट बेसिकली क्या होता है, पहले इसको देखेंगे कि ऑडिट होता क्या है। हम लोगों की जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो हमारे अगर जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, हमारी हमारे सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसकी एक अनबाइस्ड और फॉर्मल एग्जामिनेशन होती है। अनबाइस्ड का क्या मतलब है, यानी कि उसमें हम लोग कहीं पर भी लचक नहीं दिखाते कि हम इस बंदे को जानते हैं या ऑर्गेनाइजेशन इस बंदे की है, हमारा तो बड़ा प्यार मोहब्बत सलूक है इसके साथ। तो हम क्या करें, हम इसको कह दें कि अगर नहीं भी पॉलिसी खाली फॉलो हो रही ना, तो भी हम कहें कि चलो हो रही है। तो इस तरीके से नहीं करना। हम लोगों ने उसको अनबाइस्ड रह के कि भाई हमारी कोई प्यार मोहब्बत सलूक नहीं है इसके साथ। हम लोगों ने फॉर्मल तरीके में देखना है कि हाँ हो रहा है, अगर फॉलो हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। ऑडिट ही क्या होता है कि जो फर्म जिसका हम ऑडिट कर रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिट अ फॉर्मल अनबाइस्ड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट established standards and policies. Auditing the organization and people being audited are collectively called auditing। अब हम लोग यहाँ पे आईडी को देख रहे हैं। हम लोग हमारा सब्जेक्ट जो है एम आई एस का है, ठीक है। तो उस एम आई एस में हम लोग आईटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑडिट भी जो करना है वो आईटी का करना है, ठीक है। आईटी ऑडिट करेंगे, ठीक है। आईटी ऑडिट इज और आईएस यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, business applications and operations against recognized standards and policies। जो भी स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज होती हैं, जो भी मतलब होती है, उसके उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेसिक चीज तो ये होगी। इसके अलावा आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो बिजनेस की एप्लीकेशंस है, ये सब सही तरीके से वर्किंग में है या नहीं है, ये सब भी हमारा आईटी ऑडिट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, सॉरी टाइप्स हैं, उनको देख लेना है। तो उसके अंदर हमारे पास पहले आएगी इनोवेशन कैपेबिलिटीज, फिर आएगी इनोवेटिव कंपैरिजन की, फिर आएगी टेक्नोलॉजिकल पोजीशन की, फिर आएगी सिस्टम एंड एप्लीकेशंस की, फिर आएगी हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट। उसके बाद आएगा आईटी मैनेजमेंट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर ऑडिट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ऑडिट। उसके बाद आएगा क्लाइंट सर्वे टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशंस इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। उसके बाद लास्ट पे आएगा हमारे पास फोरेंसिक ऑडिट्स। अब बज़ाहिर ये 9 है और हमें पढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम देखें इनोवेशन का मतलब क्या होता है, वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। अजान हो रही है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक के लिए इसको मैं थोड़ा पॉज कर देती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आईटी ऑडिट की। उसके अंदर हमारे पास पहला आता है इनोवेशन कैपेबिलिटीज ऑडिट। इनोवेशन का क्या मतलब होता है कि समथिंग न्यू, कुछ भी नया ऐसा डेवलप कर रहे हैं, या कोई डिवाइस हो गई या कुछ भी, कोई नई चीज, समथिंग न्यू। और पहले कैपेबिलिटीज यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा सकती है। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा इनोवेटिव कंपैरिजन, यानी कि वो जो इनोवेटिव उसकी इनोवेशन की कैपेबिलिटी है, जब हम उस कैपेबिलिटी को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन में देख रहे होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा इनोवेटिव कंपैरिजन, ठीक है जी। इसमें जो बेसिकली बात है ना, कि हम लोगों ने चेकिंग करनी होती है, हम लोगों ने एनालाइजिंग करनी होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं ऑडिट का। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल पोजीशन। टेक्नोलॉजिकल पोजीशन में कि आज सिस्टम क्या है और फ्यूचर में सिस्टम क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल पोजीशन। अच्छा, उसके बाद सिस्टम एंड एप्लीकेशन। जो सिस्टम्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो रिलायबल है कि नहीं, वो ट्रस्टेड है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, ये देखना होता है। इस सिस्टम की डेवलपमेंट जो हो रही है, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखना होता है। फिर आईटी मैनेजमेंट को देखना होता है कि जो आईटी है उसका मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है। एक सेकेंड, फिर ब्रेक लेंगे हम लोग दोबारा से। तो अब हम लोगों ने बात करनी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज ऑडिट की। ये इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो
प्रोसेस की जा रही है, उसके अंदर कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। यानी कि जिस तरह हमारा जो सर्वर है उसके ऊपर अगर लोड आ जाता है, तो उस टाइम पे उन कंडीशंस को मीट करने के लिए हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, या जो नॉर्मल कंडीशन है उस दौरान हमारा सिस्टम किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्लाइंट सर्वर टेलीकम्युनिकेशंस, इंट्रानेट्स और एक्स्ट्रानेट्स ऑडिट आ जाता है। अब इंट्रानेट्स क्या होता है, एक्स्ट्रानेट्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता है। टेलीकम्युनिकेशन, क्लाइंट सर्वर, ये सारा कुछ हमें पता है, ये क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन इन सबका ऑडिट यानी कि इनको हमने एनालाइज करना है कि यहाँ पे जो हमारे जो वो हम लोग तो क्लाइंट सर्वर हो गया ना, तो हमारा सर्वर जो हमारे यूजर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उन तक जो डाटा और इंफॉर्मेशन चेंज हो रही होती है वो किस तरीके से हो रही होती है, वो कितनी एफिशिएंसी से हो रही होती है। ठीक है, हमारे यूजर्स को हमारी जरूरत पड़े, हम लोगों ने उनके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उन्होंने हमें भेजने हैं, जो डाटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी है वो किस तरीके से होती है। उसकी वजह फोरेंसिक ऑडिट यानी कि किसी किस्म का कोई फ्रॉड या कोई क्राइम वगैरह जैसी कोई एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, हम लोगों ने इसकी डिस्क्लोजिंग करनी होती है, इसकी डिस्कवरीज करनी होती है, तो ये हमारे पास फोरेंसिक ऑडिट आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको देख लिया, अब दोबारा से देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया था, इनोवेशन कैपेबिलिटीज को चेक किया, फिर उसका कंपैरिजन किया, फिर टेक्नोलॉजिकल पोजीशन को देखा कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, फिर उसके बाद ये देखा कि फ्यूचर में कहाँ होगी, फिर सिस्टम और एप्लीकेशंस को देखा कि वो वैलिड है, रिलायबल है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, फिर सिस्टम डेवलपमेंट देखा। पहले से हम लोगों ने देखा सिस्टम और एप्लीकेशंस का यूज किस तरीके से हो रहा है, फिर अगर उसको डेवलप करना है तो वो किस तरीके से डेवलप हो रही है और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद आईटी मैनेजमेंट, उस आईटी के ऊपर ये जो हम लोगों ने देखा, इस सब के ऊपर कंट्रोल चेक किया ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को देखा कि वो किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। एक काम से सर्वर के ऊपर बहुत लोड आ जाता है तो सिस्टम किस तरह से रिएक्ट करता है, इस सारी चीज का हम लोगों ने ऑडिट किया। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है उसको देखा कि वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, हमारे यूजर्स तक वो प्रॉपर तरीके से जा रही है, उसके अंदर उनको कोई मसला तो नहीं होता। उसके बाद इसके अलावा हम लोगों ने फोरेंसिक ऑडिट में फ्रॉड्स और क्राइम्स को देखा। अब इसको एक दफा पढ़ेंगे ताकि हमें इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। An audit to review organization's potential innovation opportunities and to understand how effective an organization is at managing innovation. Innovative comparison audit. An audit to review the innovative capabilities of a company in comparison to its key competitors. Technological position audit. An audit to review all the technologies that an organization is currently using and suggest future technologies that will never be deployed. Systems and applications audit, an audit to verify that the system and applications are secure at all levels of activity as well as reliable, valid, and efficient. Systems development audit, an audit to verify that the system under development meet the objectives of the organization and generally accepted standards for system developments. IT management enterprise architecture audit, an audit to verify that IT management has developed an organizational structure and procedures to ensure a controlled environment. Information processing facilities audit, an audit to verify that the processing facility is controlled to ensure timely, accurate, and efficient processing of applications under normal and potentially disruptive conditions. Client server communications, intranets, and extranet audits. In order to verify that the telecommunications controls in place on the client server and on the network connecting and the clients and the server. Forensic audits and examination of firms' financial information for discovery, disclosing, and following up the financial fraud and crimes. इसके बाद हमारे इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। हम ज़ाहिर सी बात है, हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोगों ने इतने ऑडिट्स किए, इतने सिस्टम्स को देखा, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मीन्स उसके अंदर लॉ एंड रेगुलेशंस की बात आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा जो हमारे सिक्योरिटी हो जाएगी हमारे एसेट्स वगैरह की, हमारा सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, तो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, हम बहुत सारा काम जो है खुद से नहीं करेंगे, हमारा आईटी के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स थे ताकि हमारा एरर भी कम रहे, क्योंकि ह्यूमन काम नहीं करेगा, मशीन वर्क होगा। ठीक है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, इसको आईटी कह लें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एरर कम से कम होगा। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको वन बाय वन देख लेते हैं। अचीवमेंट ऑफ ऑपरेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, effectiveness and efficient use of resources, identify and assess IT risk, effectiveness of internal controls, compliance with laws and regulations. इसके बाद हमारे पास 5 स्टेप्स आ जाते हैं आईटी ऑडिट प्रोसेस के।
स्टेप्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको इस वे में पढ़ेंगे ताकि ये हमें याद रहे। लेकिन हम लोग ना इसका नेम चेंज करेंगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल को ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी हमें ये याद रहेंगे, जिसमें सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद हमारे पास रिस्क असेसमेंट, तीसरा हमारे पास टेस्टिंग, और चौथा हमारे पास इवेल्युएशन, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिपोर्ट। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, प्लानिंग। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक प्लान क्रिएट करते हैं, और फिर उस प्लान में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे हमारा प्लान खराब भी हो सकता है। तो उस प्लान के खराब होने के बाद पहले हम उसको देखते हैं कि ठीक है, ये हम लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन ना इसके अंदर ये चीजें हो सकती हैं जो कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी। उनको देखा, उसके बाद हम लोगों ने एक दफा टेस्टेशन कर ली कि क्या ऐसे ही होगा। उसके बाद हम लोगों ने उस प्लान में थोड़ी चेंजिंग की, ठीक है, उसको इवेलुएट किया, और उसके बाद हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस जो किया था ना, जब इतनी लंबी प्रोसेसिंग होती है तो ये पूरी स्टोरी बन जाती है ना कि हम लोगों ने बहुत कुछ किया, हमने पहले प्लान बनाया था, उसके अंदर इतने मसले हमने देखे, ये मसले हो सकते थे, हम लोगों ने बाद में उन मसलों को मसलों के बाद हम लोगों ने उसकी प्रेजेंटेशन की थी कि हाँ वाकई ये वाला मसला भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। फिर हम लोगों ने उसके अंदर चेंजिंग की, हम लोगों ने प्लान चेंज किया, प्लान बी की तरफ चले गए हम। मतलब बेसिकली उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी थी, लेकिन मतलब मैं जनरली बता रही हूँ कि हम लोग ऐसे करते हैं। तो जब हम लोगों ने इतना कुछ किया ना, तो हम दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं। तो वो स्टोरी सुनाना बेसिकली रिकॉर्डिंग क्या होती है, हम लोग अपने यूजर्स को बता रहे होते हैं। ठीक है, यूजर्स हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के यूजर्स होते हैं, वो पता है कि आपको कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग उनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक समरी तैयार करनी होती है, तो उस समरी को हम लोग रिकॉर्डिंग कह देते हैं। तो पहले क्या किया, हम लोगों ने प्लानिंग की, फिर रिस्क असेसमेंट की, फिर उसकी टेस्टिंग की, फिर उसमें इवैल्यूएशन ऐड की, और फिर उस सब पर जो हम लोगों ने पीछे प्रोसेस किया था उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक है, ये हमारे हो गए इसके 5 स्टेप्स। उसके बाद हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईटी ऑडिट्स: improve decision making, determine adequacy of internal controls, ensure compliance with policies and regulation, identify operational inefficiencies and waste, assess efficient and responsible use of resources, detect the security and vulnerabilities, help in mitigating risk in an organization, identify and prevent fraud, develop IT governance। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास आईटी ऑडिट की: not access to full information, different form of an investigation, and exercise of judgment, uh, faulty or inadequate or inconclusive evidence, limited time for reviewing। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनल ऑडिट की। एंड इंटरनल ऑडिट इज यूज्ड टू असेस an organization's performance, internal controls, corporate governance, and accounting process against standards। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मामलात हो रहे होते हैं, उसमें उसका इंटरनल कंट्रोल आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गई, उसकी अकाउंटिंग जो प्रोसेसेस है वो स्टैंडर्ड्स के खिलाफ तो नहीं है, तो ये सारा कुछ देखना इंटरनल ऑडिट कहलाता है। अब ये ऑडिट मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? The mission of internal audit is to enhance and protect organizational value by providing objective assurance, advice, and insight। ठीक है, इसका बेसिकली मिशन क्या होता है इंटरनल ऑडिट का, कि ऑर्गेनाइजेशन को इनहेंस करे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, उन सब का ऑडिट करके उसको एक तरह एक शील्ड में प्रोटेक्ट कर देना, और उसकी उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें इनहेंसमेंट ऐड करना, कि अब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, और अगर अच्छा काम नहीं कर रही तो किस तरीके से अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, ये वाली चीजें। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास ऑडिट मिशन स्टेटमेंट के, वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट, एश्योरेंस और एडवाइस। इंडिपेंडेंट में हमारे पास आ जाता है ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एफिलिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड। कि जो भी हमारे पास इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड ना हो, किसी से भी उसका प्यार मोहब्बत सलूक ना हो। उसके बाद इंश्योरेंस: ऑडिटर्स प्रोवाइड assurance to management and the other stakeholders about accuracy, reliability of the financial statements and effectiveness of internal controls। इंटरनल कंट्रोल्स में आ जाते हैं हमारे पास, मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं इंटरनली, वो हमारा प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अंदर कहीं पे कोई लूप तो नहीं है, या कहीं पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई चीज मामला गलत हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, उसमें हम लोग इंटरनल कंट्रोल कह रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंटल कंट्रोल कह रहे हैं, या कुछ भी उसको कह रहे हैं, कि वो वाली चीज आ गई उसमें। उसके बाद आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी, वो एक्यूरेट बनी है कि नहीं बनी, वो रिलायबल है कि नहीं है, हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एडवाइस: audits provide advice to management about how to improve the organizations
ऑपरेशंस की, यानी अगर कहीं पे कोई भी गलती होती है तो उसके लिए ऑडिट जो है एक एडवाइस प्रोवाइड करता है कि आप लोग इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी ये वाली गलती खत्म हो जाएगी। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर की बात कर लेते हैं कि इंटरनल ऑडिटर बेसिकली क्या होता है कि एक तो टीम होती है ना, जो ऑडिट की टीम होती है वो बाहर से बुलाई जाती है, ठीक है, बाहर से बंदे आते हैं ऑडिट करते हैं, और ये क्या होता है, ये साल ईयर एंड पर होता है, ठीक है, बाहर से लोग आते हैं ऑडिट करते हैं और चले जाते हैं। एक होता है इंटरनल ऑडिट, सारा साल उसने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में खज्जल हो रहे होना है और वहीं का ऑडिट करना है उसने, ठीक है। द इंटरनल ऑडिट इज अ कंपनी एम्प्लॉय हु इंडिपेंडेंटली एंड objectively examines an organization's operations and infrastructure। इंडिपेंडेंट तो ये भी होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन इसकी हैसियत एक एम्प्लॉय की होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आईटी इंटरनल ऑडिट्स इंक्लूड कंप्लायंस ऑडिट्स, सिस्टम ऑडिट्स, ऑपरेशनल ऑडिट्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स। कंप्लायंस ऑडिट्स में हम लोगों ने क्या देखना होता है, हम लोगों ने लॉ एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग देखने होते हैं स्टैंडर्ड्स को। सिस्टम ऑडिट्स में हम लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आईटी के सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं उन सबको ऑडिट करना होता है। ऑपरेशनल ऑडिट में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने उसके अंदर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देखनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आईटी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। और सिक्योरिटी ऑडिट्स में हम लोगों ने ये देखना होता है कि जो आईटी ऑडिट, जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, ये जो भी उसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है वो सिक्योर है कि नहीं है, उसकी सिक्योरिटी को एश्योर करना होता है। एक दफा पढ़ लेते हैं इसको। कंप्लायंस ऑडिट्स कंडक्टेड टू एश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लाइंग विद applicable laws, regulations, and industry standards. Systems audit conducted to assess the design, development, implementation, and maintenance of an organization's IT systems. Operational audit is conducted to assess the efficiency and effectiveness of an organization's IT operations. Security audits conducted to assess the security of an organization's IT systems and infrastructure. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी हुई हैं यहाँ पे गुड ऑडिटर की, जिसमें आता है इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, कॉम्पिटेंट हो, विजिलेंट हो, डिप्लोमेटिक हो, असर्टिव हो, डिसेसिव हो, और गुड, हैविंग गुड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स आ जाते हैं इंटरनल ऑडिट के, दैट इंक्रीज एफिशिएंसी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, determine adequacy for internal controls, ensure compliance with policies and regulations, identify operational inefficiencies and ways, assess efficient and responsible use of resources, detect security vulnerabilities, help in mitigating risk in an organization, identifies and prevents fraud, develop IT governance। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरनल ऑडिट चार्टर आ जाता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट चार्टर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट होता है दैट डिफाइंस प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर purpose, authority, responsibility, and position of the internal audit within an organization. The charter must be defined the internal audits, mission and process, mission and purpose, objectives and scope of work, position and responsibility, independence and reporting structure, nature of assurance and consulting services, mandatory guidance। इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ कि एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। एन एक्सटर्नल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स बाय अ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए, ठीक है। कोई बंदा बाहर से आएगा, वो एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होगा और वो आके कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटरनल ऑडिट। तो लोगों ने एक्सटर्नल ऑडिट को देख लिया, अब हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर द थर्ड पार्टीज कंसल्टेंट consults appointed by corporate shareholders with the intent of carefully examining the validity of the organization's financial records। ये वही ना, कोई थर्ड पार्टी होती है, वो आती है और बाद में ऑडिट करती है, और फिर ऑडिट के वही वाले फीचर्स के वो हमें एडवाइस करके चली जाती है कि यहाँ पे आपका ये मसला था, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स देख लेते हैं। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ठीक है, अंदर वाले बंदे तो काम कर ही रहे थे, लेकिन बाहर से भी कोई थर्ड पार्टी आई है, उसने ऑडिट किया और उसने भी कहा है कि हाँ सब कुछ बिल्कुल सही है। हैव टू डिटेक्ट द फ्रॉड एंड एरर्स, किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड, यानी कि इंटरनली होता है ना कि किसी का दिल बेईमान हो जाता है, तो एक्सटर्नली होता है कि कुछ लोग आते हैं ऑडिट करते हैं तो वो किसी भी तरह का फ्रॉड या कोई एरर होता है तो वो उसको भी डिटेक्ट कर देते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, और इस तरह इंटरनली ऑडिटर्स को भी पता होता है कि एक्सटर्नली ऑडिटर्स आएंगे और वो आके ऑडिट करेंगे तो वो तो हमारा फ्रॉड और एरर पकड़ा जाएगा, तो वो भी कोशिश करेंगे वो इस तरह का फ्रॉड या एरर कहीं पर भी ना करें, तो इस वजह से उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद
इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, और वो इसको इंश्योर करते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशन सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट के बारे में पता लगेगा। जो वर्क परफॉर्म होता है वो एक्सटर्नल में एज अ प्रोफेशनल होता है, क्लाइंट रिलेशनशिप होता है, जबकि इंटरनल में एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है। एम जो होता है एक्सटर्नल का होता है रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, इंटरनल में होता है असिस्ट मैनेजमेंट। टाइमिंग में एक्सटर्नल ऑडिट्स जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के करीब आते हैं, जबकि नियर एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि इंटरनल में थ्रू आउट द ईयर वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टू रिव्यू फेयर प्रेजेंटेशन एंड गिव ओपिनियन, एंड इंटरनल में टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर में एक्सटर्नल में होता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम क्लाइंट और इंडिपेंडेंट, और उसके बाद इंटरनल में इंडिपेंडेंट बट स्टिल एन एम्प्लॉय। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑडिट रिस्क आ जाता है। ऑडिट रिस्क ऑल्सो रेफर टू रेसिडुअल रिस्क, refers to the risk that the auditor may not detect an error or express an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. इसके अंदर क्या होता है, इसमें कोई भी ऐसा हमारे पास एरर होता है जो हमारे पास एक्सप्रेस होने से रह जाता है, तो उसको हम कह देते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट करने के दौरान भी कोई ना कोई ऐसा एरर हमारी नजर से रह जाता है जो कि, क्योंकि जाहिर है ना, वो आप लोगों ने किसी भी सोप की कोई कमर्शियल देखी होगी जिसमें 99.9% होता है, वो 0.01% वाला कहीं ना कहीं पे वो रह ही जाता है जरा सी। तो इसमें भी वही वाली बात है। उसके बाद ऑडिट रिस्क मे बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाइड बाय डिडक्शन रिस्क। अच्छा, inherent risk क्या होता है हमारे पास, refers to the natural risk in the financial statement that has not been controlled। कोई ना कोई ऐसा मसला इसके अंदर नेचुरली तौर पर होता है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते, उसको हम इनहेरेंट रिस्क कह देते हैं। कंट्रोल रिस्क में हमारे पास आता है occurs when our financial misstatement result from a lack of proper accounting controls, कि हमारी जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी वो वहां पे कहीं ना कहीं कोई लूप रह गया, उसकी वजह से जो एरर, जो रिस्क अराइज होता है उसको हम कहते हैं कंट्रोल रिस्क। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिडक्शन रिस्क, occurs when the auditor fails to identify material misstatements in the financial statements of a firm, कि कोई भी ऑडिटर है, अगर उसकी नजर से कोई चीज बच गई है, कोई वो ढूंढ रहा था और उसको वो डिडक्ट नहीं हुआ, ठीक है, डिडक्शन से कोई चीज ऐसी थी, कोई इस तरह का एरर था जो उसकी नजर से छुप गया, तो उसको हम कह देंगे डिडक्शन रिस्क के, उसको वो पता नहीं लग सका। उसके बाद कंप्लायंस टेस्टिंग एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग, ठीक है। इसके अंदर ये कंप्लायंस टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग टेस्टिंग क्या होती है। कंप्लाइंस में तो पता लग गया ना कि हम लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें। उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं, ऑल्सो नॉन एज कन्फर्मेंस टेस्टिंग, एन ऑडिट एक्टिविटी परफॉर्म टू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कंपनी काम करी है कि नहीं करी, उसको देखना है, ये उसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद सब्सटेंसिव टेस्टिंग में इज एन ऑडिट activity performed to detect errors or material misstatements in a company's financial statements। मटेरियल का क्या मतलब होता है, मटेरियल जो है ना, मटेरियल अमाउंट में मटेरियल में स्टेटमेंट्स, ये सब कंपनी टू कंपनी वेरी करी होती है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उसकी मटेरियलिटी उसकी नज़र में किसी और तरह की होगी, कि बहुत बड़ी कंपनी के लिए तो 5-10 लाख की बात होगी तो उनके लिए मटेरियल अमाउंट बनेगी, या अगर वो बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके लिए वो भी मटेरियल नहीं होगा। जबकि छोटी कंपनियों के लिए 1 लाख 2 लाख की बात भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है, मटीरियलिटी है ना। उसके बाद अब अगर हमसे 5,000 रुपये गुम हो जाए और अगर मरियम नवाज से 5,000 रुपये गुम हो जाए तो बहुत फर्क होगा। अच्छा, ऑडिट सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं। ऑडिट सैम्पलिंग इज एन इन्वेस्टिगेशन अप्रोच in which less than 10% of the total items within the population are selected to be audited based on the assumptions that every sample has almost the same characteristic of the complete data is representing। ऑडिट सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग कोई एक ऐसा सैंपल ले लेते हैं और सोचते हैं या और ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो इस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ओवरऑल यही होगा, तो इसके अंदर जो अगर कोई मिस्टेक है या कुछ भी है तो वही हमारा मतलब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बाकी सब प्रॉब्लम्स भी वैसे ही हम लोग कर देंगे। अच्छा, इन सैम्पलिंग पॉपुलेशन मींस द एंटायर सेट ऑफ डाटा फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज selected and about which the auditor wishes to draw conclusions।
अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं सैम्पलिंग स्टेप्स इन ऑडिटिंग में। बेसिकली सैम्पलिंग क्या होती है ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसकी वर्डिंग चेंज होगी और उसके अंदर कोई इतना फर्क नहीं आएगा। सैम्पलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला जी हमारे पास डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग, कि हम लोगों ने सैम्पलिंग करनी क्यों है। उसके बाद डिफाइन द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड, पहले करनी क्यों है, फिर हम पॉपुलेशन को देखेंगे कि उसके अंदर हम लोगों ने कौन सी पॉपुलेशन को सैंपल लेना है। उसके बाद डिटरमाइन द सैम्पलिंग मेथड, फिर सैम्पलिंग की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फिर देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। फिर कैलकुलेट द सैंपल साइज, फिर सैंपल साइज को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इवेल्युएट द सैंपल फ्रॉम एन ऑडिट पर्सपेक्टिव, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सैंपल को इवेल्युएट करेंगे ऑडिट पर्सपेक्टिव से। क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखा सैंपलिंग करनी क्यों है, फिर देखा कि पॉपुलेशन कौन सी है जिसमें से सैंपल लेना है, फिर सैम्पलिंग मेथड को सिलेक्ट किया, फिर सैंपल साइज को सिलेक्ट किया। ठीक है, सैंपल का साइज इतना होना चाहिए, फिर सैंपल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑडिट पर्सपेक्टिव से उस सैंपल को इवेल्युएट कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ गया स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वर्सेस नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अच्छा, अब ये बात क्या होती है ये भी आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी ये प्रीवियस जो हम लोगों के एग्जाम्स हुए थे उसमें हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन रैंडमली। स्टैटिस्टिकल में क्या होता है कि हम लोग पूरी हमारे पास एक पॉपुलेशन दी है और उसमें रैंडमली हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है कि ये वाला सैंपल हो जाएगा। ठीक है, इट अलाउज ईच सैम्पलिंग यूनिट टू स्टैंड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इसके अंदर हर किसी को इक्वल चांस मिलता है कि इसकी बारी भी आ सकती है, इसकी टर्न भी आ सकती है, ये भी एज अ सैंपल चूज हो सकता है। लेकिन नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या होता है, सैंपल इज चूजन ऑन बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स जजमेंट। ठीक है, इसके अंदर ऑडिटर की मर्जी है कि वो किसको एज अ सैंपल देगा। अच्छा, ऑडिट एविडेंस की बात कर लेते हैं। ऑडिट एविडेंस इज द डॉक्यूमेंटेड information collected by an auditor to support the audit findings and on which the auditor's opinion is based. Audit evidence क्या होता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, किसने की होती है, ऑडिटर ने कलेक्ट की होती है, जो कि उन सारी ऑडिट की फाइंडिंग्स को सपोर्ट कर रहा होता है, जो कि ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू की अब बेस बनती है। ठीक है, एक बंदा है उसने ऑडिट कर लिया, वो ऑडिट करने के बाद अब उसने जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास कुछ ओपिनियंस होने चाहिए। उसने जो डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की होगी उस सबको सपोर्ट करने के लिए उसकी ऑडिट की फाइंडिंग्स होगी, तो उसको हम बोलेंगे ऑडिट एविडेंस। मींस कि जो भी उसने वर्किंग की है उसका उसको प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, वेज ऑफ गैदरिंग एविडेंसेस, अब इसमें कुछ तरीके होते हैं सबूत इकट्ठे करने के ना, वो देख लेते हैं। रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, reviewing policies and standards, reviewing documentation, interviewing appropriate personnel, observing processes and employees performance। पहला क्या है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सारा रिव्यू करना है, फिर उसने सारी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना है, फिर जितनी उसकी डॉक्यूमेंट्स थे उसने उसको रिव्यू करना है, फिर उसने कोई भी एक अप्रोप्रिएट पर्सन ढूंढना है और उससे इंटरव्यू करना है। उसके बाद जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं और जो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस हो रही है उस सबको उसने ऑब्जर्व करना है। तो ये हमारे पास कुछ वेज हो गए कि इन सब के तहत हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, प्रूफ्स इकट्ठे कर सकते हैं, एविडेंसेस इकट्ठे कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ गया है डिटरमिनेट्स फॉर इवेल्युएटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इंक्लूड। तो उसमें देख लेते हैं डिटर्मिनेटर्स में कौन कौन सी जो है वो इंक्लूड होती है। इंडिपेंडेंस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडर, ठीक है, जो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है ना उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडर, उस वो भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, degree of objectivity of the evidence, timing of the evidence, effectiveness of organizations, internal controls, is oral or written, ये oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है, auditor's knowledge, consistency of evidence। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट अब क्या होती है, it is the final document written by the auditors after the completion of the audit। ये ऑडिट रिपोर्ट वो होती है और रिपोर्ट हमेशा लास्ट पे दी जाती है। जिस तरह हम लोगों ने पूरा स्टेप पढ़ा था ना, पहले हम लोगों ने प्लानिंग की थी, फिर उस प्लानिंग के करने के बाद हम लोगों ने फिर क्या किया था, प्लानिंग के बाद हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट की थी, रिस्क असेसमेंट करने के बाद हम लोगों ने टेस्टिंग की थी, टेस्टिंग करने के बाद हम लोगों ने उसके अंदर कुछ इवैल्यूएटिंग की थी और इस सब की हम लोगों ने एक समरी एक रिपोर्ट तैयार की थी।
ठीक है। तो सेम एज इट इज लास्ट स्टेप था ना रिपोर्ट का, तो इसमें भी ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑडिटर लिखता है। कब लिखता है? जब वो सारा ऑडिट कर चुका होता है। इट कंटेन्स ऑडिटर्स ओपिनियन, और इसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन लिखता है। ठीक है, कि मैंने ये सारा ऑडिट किया है और मेरे मुताबिक सारी चीजें इस तरीके से हैं, सही है, गलत है, या इसमें ये होना चाहिए, इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद इस ऑडिट रिपोर्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब उसको वन बाय वन देख लेते हैं। और ये जिस तरह हम लोग रिपोर्ट लेटर्स वगैरह कुछ लिखते हैं ना, तो उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, इसी तरह ये फॉर्मेट की हेडिंग्स हमें दी हुई है। टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, एड्रेसेस डिटेल, opening paragraph, audit scope paragraph, auditor's opinion paragraph, signature of auditor, date of audit report, date of signature, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद ये मटीरियलिटी आ गई। Materiality is a concept in account in auditing that refers to the amount of misstatement that would affect the decisions of the user's financial statement. Misstatements are considered to be material if they could influence the decision of users of financial statements. अब materiality क्या है? इसके अंदर हम लोगों ने पहले तो देख लिया था ना, कि मतलब मैंने कहा अगर हमसे 5,000 का लोन पूछा है, बढ़िया हमने वहां से गिर तो कितना फर्क होगा ना, उसके लिए तो वैल्यू नहीं है, मान लीजिए तो बहुत वैल्यू है। तो सेम एज इट इज, ये जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑडिटिंग में देखते हैं ना, कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसके गलत या सही होने से जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, उस ऑडिट रिपोर्ट के आने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, यहाँ पे हमें फायदा हो सकता है। तो वहां पे अगर वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कोई मटीरियलिटी एरर मौजूद है उस रिपोर्ट में, तो इससे अगर वो एरर होता तो वो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट ना करते। वो कहलाएगी मटीरियलिटी, मटीरियलिटी एरर। ठीक है, वो वहां पे ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती थी उस रिपोर्ट में कि अगर वो उसमें मौजूद होती और वो इन्वेस्टर्स उसको देखते लेकिन सोचते कि फिर भी इन्वेस्ट कर देंगे, तो फिर वो जो मिसस्टेटमेंट थी उसको मटेरियल कंसीडर नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट थी जो जो कि अगर इन्वेस्टर्स को पता होती तो वो उसमें इन्वेस्ट ना करते, तो उसको हम कहेंगे कि ये मटेरियल थी। दोबारा पढ़ेंगे इसको। Materiality is the concept in audit that refers to the amount of misstatement that could affect the decisions of the users of financial statements. Misstatements are considered to be material if they could influence the decision of users of the financial statement. I hope so कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Materiality is a matter of professional judgment and that the auditor must consider. Significance of the item of the particular entity, pervasiveness of the misstatement, effect of misstatement on the financial report as a whole, nature of misstatement, circumstances surrounding the entity, size and nature of misstatements. इसके बाद हम बात कर लेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट्स वर्सेस अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स की। कि क्वालिफाइड रिपोर्ट्स क्या होती हैं और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स क्या होती हैं। An unqualified report indicates that the auditor has found no material misstatements in the financial statements, while qualified report indicates that the auditor has found one or more material misstatements in the financial statements. अब मटीरियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटमेंट्स क्या होती हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, कि यानी कि जो इन्वेस्टर होता है उसके, या जो यूजर्स होते हैं बाकी के, उनके जो डिसीजन है उसको अफेक्ट करे तो फिर वो मटेरियल है, और अगर ना करे तो फिर मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब ये अगर करता है, अगर ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ गई, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्वालिफाइड। और अगर उसको नहीं नजर आती तो हम उसे कहेंगे अनक्वालिफाइड। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू। True and fair view means that the financial statements are free from material misstatements and faithfully represent the financial position and performance of the entity. तो इसमें हम true and fair view किसको कह रहे हैं? Unqualified को। Because an unqualified report indicates the auditor has found no material misstatements in the financial statements, and true and fair view means that financial statements are free from material misstatements and faithfully represent the financial position and performance of entity. ठीक हो गया। उसके बाद जी इंटरनल कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। कंट्रोल्स बेसिकली बात हो रही होती है मैनेजमेंट की। कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट कंट्रोल करती है ना,
मैनेजमेंट का मतलब कंट्रोल करना है, वो वाली चीज आ गई। अब a system of internal controls is a set of policies and procedures that an organization implements to ensure the accuracy and reliability of its information system। कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स काम कर रहे हैं वो उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को कितना रिलायबल एक्यूरेट बना रहे हैं, ये वो सारा सिस्टम जो है, इसके अंदर जो सेट ऑफ पॉलिसीज जो है, जो प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे इंटरनल कंट्रोल। ये पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। A system of internal controls is a set of policies and procedures that an organization implements to ensure the accuracy and reliability of its information system। ठीक हो गया। इसके हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं इंटरनल कंट्रोल्स की, उसको देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेजर क्लासिफिकेशंस: प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, डिटेक्टिव कंट्रोल्स एंड करेक्टिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव में क्या आता है? यूज्ड टू कीप एरर्स और इनरेगुलरिटीज फ्रॉम occurring in the first place। डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या आता है? यूज टू डिटेक्ट एरर्स और irregularities that may have occurred। corrective controls में use to correct errors or irregularities that have been detected। प्रिवेंटिव में क्या था कि अभी कोई भी इस किस्म का एरर या इरेगुलरिटी आई नहीं है, तो कुछ भी इस तरह का गलत होने से पहले ही हमने कंट्रोल कर दिया। डिटेक्टिव में क्या हो चुका है तो हम लोगों ने उसको डिटेक्ट कर लिया। प्रोएक्टिव में क्या हो गया है तो हम लोगों ने उसको सही कर लिया। ठीक हो गया। इससे कुछ कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास। कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम: सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन का मतलब आपको पता है कि हम लोग जो है अपना काम किसी और को सपोर्ट कर देते हैं। competent and trustworthy personal system of authorizations, adequate documentation, physical control over assets and records। उसके बाद जी हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एक्सेस टू डाटा एंड प्रोग्राम्स, system development and change controls, data processing operations, data system programming and technical support functions, data processing quality assurance procedures, physical access controls, business continuity, disaster recovery planning, और database administration। ये सारे हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स आ गए हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंट्रोल को डेवलप करना होता है। ठीक है, उसके बाद जी इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जिसमें क्रैमिंग करनी होती है। और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, पढ़ने सारे हैं लेकिन दिमाग में अगर 5-6 भी रखेंगे तो काफी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा 5 पेपर्स में। तो 5 पॉइंट्स याद कर लें लेकिन पढ़े सारे, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कोई सारे दिमाग में होना जरूरी है, ताकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग से स्किप जरूर हो जाती है, हमारे माइंड में नहीं रहती है, लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं ना तो वो हमें याद आ जाती है। इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं हमें। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल कंट्रोल: safeguarding of IT assets, reduce the risk of fraud and errors, improved financial reporting, improved corporate re- reputation, improved integrity of operating system, network and operations, system continuity and disaster recovery planning, incident response and handling plan, compliance with corporate policies and legal requirements, reliability of processes, efficient and economical operations, accuracy, completeness, and security of data, reliability of overall information processing activities। इसके बाद जो है ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वाला शुरू हो जाता है। यहाँ से पार्ट जो है इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट, CSA। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कैट्स आएगा। ठीक है, रिस्क वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे एक आएगा ये वाला कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स और टेक्निक्स। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये गैस आ गया, जर्नल ऑडिट सॉफ्टवेयर। और इसके बाद चैप्टर नंबर 7, जो कि ये वाला चैप्टर जो है ये हम लोगों ने नहीं करना, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी का, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, तो कहाँ पर थे हम लोग? ये तो हम पढ़ चुके हैं जी। यहाँ से पढ़ना था कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करना है अब।
तो कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट है, CFA, उसको पढ़ लेते हैं। Control self-assessment is a self-regulation activity that involves employees to participate in assessing the effectiveness of internal controls. कि इसके अंदर हम employees को भी participate करवाते हैं कि वो भी देखें कि internally controls किस तरीके से effectiveness उनके अंदर है या नहीं है। It ensures that employees are aware of risk to the business, कि employees को भी पता होता है कि business के risk क्या-क्या है, and they conduct periodic, proactive and review of controls. ठीक है, उसके बाद ही इसके सिक्स बेसिक मेथडोलॉजीज आ जाती है हमारे पास CSA की। वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी, सेल्फ ऑडिट, और मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग, जिससे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ फीडबैक वगैरह का सिस्टम होता है। उसके बाद कुछ कस्टमाइज्ड क्वेश्चनरीज होंगी, उसके बाद कंट्रोल गाइड, वन एंड वन इंटरव्यूज, कंट्रोल मॉडल वर्कशॉप्स, इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स वगैरह। इसके कुछ बेनिफिट्स आ जाते हैं हमारे पास: सेफ फाइंडिंग ऑफ आईटी एसेट्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल improved financial reporting, improved corporate reputation, improved integrity of operating system, work and operations, business continuity and disaster recovery planning, incident response and handling plan, compliance with corporate policies and legal requirements, reliability of processes in efficient and economical operations, accuracy, completeness and security of data। मतलब इसमें से पढ़ना सारा है, लेकिन कोई सी 5-6 पॉइंट याद कर लें। ठीक है, उसके बाद ये रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसेस, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल operations, accuracy, completeness, and security of data, increased employee awareness of organizational objectives, increased communication between operational and top management, more effective and improved internal controls, reliability of overall information processing activities। इससे कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं हमारे पास। ड्रॉबैक्स ऑफ कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट में: could be mistaken as an audit function, replacement may be regarded as an additional workload, failure to act on improvement suggestions could damage employee morale। अच्छा, मतलब कि अगर एम्प्लॉय फेलियर टू एक्ट ऑन इम्प्रूवमेंट सजेशंस could damage employee morale, इसके अंदर ना क्या होता है कि एम्प्लॉय है, उसने ये सारा असेस किया कि यहाँ पर ना ये वाला रिस्क हो सकता है। अक्सर होता है कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि हमारे पास तो फिलहाल हम खुद तो नहीं जॉब कर रहे, लेकिन हम लोगों ने फिल्म्स में या ड्रामास में देखा है कि कहीं पे कोई एम्प्लॉय है और वो कोई मशवरा देता है ना, अक्सर औकात वो हीरो होता है। तो खैर वो एम्प्लॉय को मशवरा देता है ना, तो उसको चुप करवा दिया जाता है कि जाओ, तुम्हें क्या पता हो। तो ये वो वाली बात आ जाती है इसके अंदर कि उसने कोई सजेशन दी है, तो लेकिन उसको हम लोगों ने उस सजेशन को माना ही नहीं कि हाँ। तो अब उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय का मोराल गिर जाएगा। लैक ऑफ मोटिवेशन में लिमिट इफेक्टिवनेस इन द डिटेक्शन ऑफ वीक कंट्रोल्स। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क की। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू एनीथिंग दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस। रिस्क बिजनेस के लिए क्या होता है कि उसका किसी भी तरीके से अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी आती है ना, और जो जो इम्पैक्ट डालेगी उसकी बिजनेस कंडक्ट पे, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस के लिए रिस्क है ये। अच्छा, रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या होता है? रिस्क बेस्ड ऑडिट इज एन ऑडिट अप्रोच दैट फोकसेस ऑन द एरियाज ऑफ अ कंपनी दैट आर मोस्ट लाइकली टू pose a risk to the company's objectives and allows management to put the right controls in the place for better performance। यानी कि उस सारे जो रिस्क को हम लोगों ने ऑडिट करना है कि कहीं भी बिजनेस में कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, तो उस सारे को हम लोग क्या कहेंगे? रिस्क बेस्ड ऑडिट। उसके बाद हमारे पास रिस्क बेस्ड ऑडिट के कुछ इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर पहले हम क्या करते हैं? रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब उसके अंदर हम लोगों ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को असेस करना है। पहले रिस्क को असेस किया, फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को असेस किया। उसके बाद डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, उसके बाद हम लोगों ने एक ऑडिट प्लान बनाया, फिर उसको उस प्लान को हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसको कम्युनिकेट कर दिया। पहले क्या किया? हम लोगों ने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम लोगों ने असेस किया मटेरियल स्टेटमेंट्स को, फिर हम लोगों ने एक ऑडिट का प्लान बनाया, देन हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हम लोगों के पास जो रिजल्ट आए उसको हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया। उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क असेसमेंट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई potential hazards and analyze what could be happen if a hazard occurs। अब रिस्क असेसमेंट में हम लोगों ने क्या किया? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों ने देखना है क्या कहीं पे कोई हैजर्ड आ सकता है।
तो इसकी आइडेंटिफिकेशन को हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट बोल दिया कि क्या कोई चांस है कि कोई नेगेटिविटी बिजनेस में आएगी। अब इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम लोगों ने ये रिस्क असेसमेंट किस तरीके से करनी है। वहां पे तो था ना कि हमारे पास रिस्क जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, रिस्क आ जाता है बिजनेस में, कोई नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करनी है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स, कि कौन कौन से खतरात हैं उसको हम लोगों ने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद या कौन कौन से खतरात हैं जो हो सकते हैं उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। डिफाइन हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि क्या ये हमारा कोई कंपिटिटर है जो हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकता है और वो किस तरीके से कर सकता है। मतलब इस तरह की चीजों को हम लोगों ने डिफाइन किया। उसके बाद इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन दी प्रिकॉशंस। हम लोगों ने अब वो रिस्क को इवेलुएट किया और उसके बाद ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसी कौन सी तदाबीर कर सकते हैं कि हम उससे बच जाएं। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम। हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो जितनी भी फाइंडिंग्स थी कि हम लोगों ने पहले देखा था कि कौन कौन से खतरात हैं, किस कौन उसको पैदा कर सकता है किस तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से रिस्क हैं, उसको इवेलुएट किया। उसके बाद डिसाइड किया कि हम लोगों ने उनसे बचना कैसे है। कि जितनी हमारी फाइंडिंग्स थी हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया और देन हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस भी थी, उनको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद रिव्यू योर असेसमेंट एंड अपडेट इफ नेसेसरी। हम लोगों ने जितनी भी हमारी असेसमेंट थी उसको हम लोगों ने रिव्यू किया और अगर वो हमारे लिए नेसेसरी था तो हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया कि नहीं, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इसकी चेंजिंग कर देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स की जो रिस्क असेसमेंट के होते हैं। तो जाहिर है कि हम लोग एक चीज को पहले से ही कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना बेनिफिट हो जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा रहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई मसला नहीं होगा। तो जाहिर है इस किस्म की हमारी कुछ बातें लिखी होंगी, जब सिस्टम को कोई मसला नहीं होगा तो जाहिर है उसकी गुडविल ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। जब बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा तो लोग उसकी ज्यादा तारीफ करेंगे, यानी उसकी गुडविल ज्यादा होगी। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड एंड एनालिसिस द ऑफ पॉसिबल थ्रेट्स, हेल्प इन मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, create awareness about hazard and risk, determine the budget to remediate risk, support risk-based audit decisions, improve organization reputation। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की बात होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा था, दोबारा से हम लोग टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे रिस्क, कि रिस्क बेसिकली क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखी रिस्क असेसमेंट और अब हम देखेंगे रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क बाय developing a plan to manage, eliminate or limit setbacks as much as possible। पहले क्या था, रिस्क क्या होता है, फिर हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट की कि ताकि कुछ भी ऐसा होने से पहले ही हम उसको अवॉइड कर सके। उसके बाद जी हम लोगों ने उसकी कुछ प्रिकॉशंस वगैरह जो हम लोगों ने उसमें ले ली थी। अब रिस्क मिटिगेशन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे कि जित जो भी इम्पैक्ट होगा रिस्क का हमारी प्लानिंग पे, हम वो रिड्यूस कर जाए वो। ठीक है, हम लोगों ने अपने रिस्क को रिड्यूस करना है, तो वो कहलाएगा रिस्क मिटिगेशन। Risk mitigation is the practice of reducing the impact of potential risk by developing a plan to manage। कि हम लोग कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, eliminate और limit setbacks as much as possible। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ स्ट्रेटजीज है हमारे पास, उसको हम लोग देख लेंगे। रिस्क अवॉइडेंस, रिडक्शन, ट्रांसपेरेंस और एक्सेप्टेंस। ठीक है, रिस्क अवॉइडेंस क्या होती है, अवॉइड द रिस्क फ्रॉम अकरिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग उसकी अकर होने से पहले ही उसको अवॉइड कर लेंगे। उसके बाद रिस्क रिडक्शन, के जो भी रिस्क होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्क व्हेन इट डज अकर्स। तो उसका जो रिस्क होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफरेंस, ट्रांसफर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ रिस्क टू अ थर्ड पार्टी। कि यानी कि उसकी जो रिस्क होता है ट्रांसफर हो जाता है ना, यानी थर्ड पार्टी से। हमारे जिस तरह हम लोगों ने बात की थी मटेरियलिटी के इशू पे, कि अगर इन्वेस्टर्स को पता होता, अगर उनके पास ये मटेरियल स्टेटमेंट होती तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करते। तो इस किस्म की जो कॉन्सिक्वेंसेज ट्रांसफर हो रहे हैं ना रिस्क के थर्ड पार्टीज की तरफ, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद रिस्क एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द रिस्क एज इट स्टैंड्स। तो इसके अंदर क्या है कि हम लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे जो रिस्क स्टैंड कर रहा है इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सो कि हमारे पास लास्ट जो है ये टेस्ट भी हुआ था, कंप्यूटर
असिस्टेड ऑडिट कंट्रोल्स और टेक्निक्स, इसको कैट्स कह देते हैं हम लोग। और अगेन आप इसका पूरा नाम याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन मेरे ख्याल में इसका एक आधा पॉइंट भी बन जाता है कि अगर आप लोगों को एब्रीविएशन आती है तो कि ये किसके लिए स्टैंड फॉर करते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, इट स्टैंड्स फॉर, ये बेसिक एक सेपरेट आपको एक पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। इट कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स और टेक्निक्स। CAS can be defined as any use of technology that an information system auditor uses to gather and analyze data during an IS audit। इसके अंदर वो क्या कहता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज एनी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं दैट एन आईएएस ऑडिटर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो ऑडिट करने आया है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। क्यों? गैदर एंड एनालाइज डाटा, क्यों उसने डाटा को गैदर और एनालाइज करना है, तब करना है ऑडिट करते हुए। एक ऑडिटर जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करने आया है, उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करते हुए जो टेक्नोलॉजी का यूज करना है डाटा को एनालाइज और गैदर करने के लिए, वो कहलाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो CAS can be defined as any use of technology that an IS auditor uses to gather and analyze data during an IS audit. They facilitate efficient and effective processing of large volume of data which can't be audited manually। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है जिसको मैनुअली ऑडिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए ये ज्यादा बेटर वे है। अच्छा, अब कैट्स इंक्लूड data analysis and extraction tools, spreadsheets, databases, statistical analysis, generalized audit software, business intelligence। उसके बाद कुछ कंसिडरेशंस आ जाती हैं इन द सिलेक्शन ऑफ कैट्स में कि ईज टू यूज, कैपेसिटी टू हैंडल, efficiency of analysis, level of training required, effectiveness in preventing and detecting frauds, licensing licensing structure, time and cost to set up the technique, time and cost to maintain the technique, expect life of the system, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ एप्लीकेशन आ जाती हैं, उसको देख लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी स्टैंडर्ड यूटिलिटीज यूज टू इंस्टॉल द पैकेज, test data generators used to test and verify the logic of application programs, software library packages used to verify the integrity and appropriateness of program changes, system control audit review file used to provide continuous monitoring of the system's transactions, audit expert system used to hold expert knowledge and logic provided by experts by for decision making. Applications tracing and mapping system used to provide a linkage of data about internal controls, built-in systems। इसके बाद हमारे पास आ जाता है specialized audit software used to perform specific audit steps for IS auditors such as sampling, footing and matching। इसके अलावा ये सारा आप लोगों ने थोड़ा क्रैम करना है। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं कैट्स के, वो हमारे पास क्या है, कंक्रीट ऑडिटिंग, continuous monitoring of transactions, particularly particularly useful for large files, improves audit effectiveness, perform audit more efficiently, increase quality and accuracy of audit, conduct audit in cost-effective manner, enables auditors more freedom with their work and focus on critical areas, optimize use of resources, reduce audit delivery time, eliminate the need to collect samples, standardize audit methodologies, offering creative and detailed analysis, simplified project documentation due to automation। उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं हमारे पास कैट्स के, क्योंकि जब ये इतना कुछ कर रहा है ना तो एक्सपेंसिव होगा। सबसे पहली बात, ये एक्सपेंसिव होगा, कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेट अप, प्रोसेसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट मे बी हाई, difficulty difficulty in maintenance, needs regular reviews, client permission and cooperation may be difficult to obtain, potential incapability with client's computer system, the audit team may not have sufficient IT skills, data may be corrupted or lost during the applications of CAPs। उसके बाद ये लास्ट वन है हमारे पास, कैस जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर।
Generalized audit software is a type of computer assisted audit technique CAT that is used by auditors to automate and streamline the audit process. ये एक टाइप है कैट की, और वो क्यों हम लोग ऑडिटर यूज करता है टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन द ऑडिट प्रोसेस। पहले उसने बताया कि ये कैट की टाइप है गैस, और उस कैट की टाइप और गैस को एक ऑडिटर क्यों यूज करता है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, ऑडिट की प्रोसेस को ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करना होता है। गैस इज अ सेट ऑफ pre-written programs that can be used to extract, analyze, and test data from a company's computer system. ये कुछ प्री रिटेड हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं गैस में। गैस जो है, और ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, जो कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हम लोगों ने डाटा को टेस्ट करना होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है। पहले हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ फीचर्स इंक्लूड हो जाते हैं। वो होते हैं हमारे पास मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अर्थमेटिकल फंक्शंस, सीक्वेंस चेकिंग, फाइल assess or file recognition, सॉरी रीऑर्गेनाइजेशन, फाइल रीऑर्गेनाइजेशन। और इन्हीं के फीचर्स के साथ साथ हमारे पास ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो गया। अब हम लोगों ने मूव करना है अपने अगले चैप्टर की तरफ। ये वाला चैप्टर हम लोग स्किप कर देंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सारा हम लोगों ने स्किप कर देना है। उसके बाद हम आगे हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑडिटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो था ये हमारा हो गया। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस वाला जो है, ये हमारा ऑडिटिंग सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। तो हम लोगों ने ये वाला चैप्टर करना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ऑडिट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास हार्डवेयर रिव्यूज आ जाते हैं। तो पहले सारे को देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें है क्या क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यू, डेटाबेस रिव्यू, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे था लोकल एरिया नेटवर्क रिव्यू, लैन का रिव्यू करना है। उसके बाद आईएस ऑपरेशंस रिव्यू, सब रिव्यूज दिए हुए हमारे पास यहाँ पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिव्यू, उसके बाद एसिड रिव्यू, लाइस आउट ऑपरेशंस। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे आ गया इनपुट आउटपुट कंट्रोल फंक्शंस। उसके बाद इनपुट कंट्रोल टेक्निक्स इंक्लूड डेटा फाइल कंट्रोल प्रोसीजर्स, आउटपुट कंट्रोल्स आ गए उसके बाद हमारे पास। और ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चले बिना कोई टाइम ज़ाया किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने हार्डवेयर रिव्यूज, यहाँ पे कुछ रिव्यूज है, उसके अंदर रिव्यू आ गया, क्राइटेरिया आ गया, उसके बाद कैपेसिटी मैनेजमेंट रिव्यू आ गया, रिव्यू चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स आ गए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं जिनकी हमें क्रैम करने पड़ेंगे। तो एक तो हम देख भी लेंगे, उसको समझ भी लेंगे। हार्डवेयर एक्विजिशन रिव्यू, एक्विजिशन होता है किसी भी चीज को हासिल करना। ठीक है, तो हार्डवेयर एक्विजिशन रिव्यू का मतलब है कि हमारे पास एक हार्डवेयर हम लोगों ने एक्वायर कर लिया है, तो उसका हम लोगों ने रिव्यू बताना है। एक्विजिशन प्लान इज कंपेयर्ड रेगुलरली टू मैनेजमेंट बिजनेस प्लान्स इफ environment is adequate for current and new installation, technical obstacles of existing in new hardware, proper documentation of hardware and asset specifications. उसके बाद हमारे पास पीसी एक्विजिशन क्राइटेरिया आ गया, पॉलिसी रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ यूसेज ऑफ पीसी, criteria and procedure for approval and acquisition of PC, supporting of cost benefit analysis, acquisition through IS purchasing to take advantage of volume discount and quality। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटी मैनेजमेंट रिव्यू आ जाता है, कॉन्टिन्यूस रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड आईएस ट्रबल लॉग, processing schedules, job accounting systems, reporting system reports, preventive maintenance schedules and reports। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट में हम लोगों ने बेसिकली हम लोगों ने उसका कॉन्टिन्यूस रिव्यू देना होता है, उसकी परफॉर्मेंस का, उसकी कैपेसिटी का, जो भी हमारा हार्डवेयर होता है उसका। ठीक है, उसके बाद ये रिव्यू चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास आता है टाइमली इंस्ट्रक्शंस टू पर्सनल टू चेंज हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, अलाउंस टू एडिक्वेट टाइम फॉर इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हार्डवेयर, selection of sampling of hardware change and procedure, ascertain that hardware change is communicated to
उन्होंने भी all concern effectiveness of change, so it do not interface normal course of action. After that, we have operating system review. तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिव्यू क्या होता है? यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसका हम रिव्यू देंगे, इन व्हिच ऑडिटर एग्जामिन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। उसके बाद डेटाबेस रिव्यू में हमारे पास इन व्हिच ऑडिटर एग्जामिन्स, हम लोग देखेंगे कि ऑडिटर क्या-क्या चीज़ें एग्जामिन करता है। अब डेटाबेस रिव्यू में क्या करेगा? डिज़ाइन, असेस एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरफेसेस, प्रो अ पोर्टेबिलिटी। उसके बाद हम लोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का रिव्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास ऑडिटर क्या एग्ज़ामिन करेगा, अच्छा ये सारी जो पॉइंट्स है ना, ये उसके एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो कोई भी टेस्ट कर सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से ऐसे कौन-सा पॉइंट है जो कि ऑडिटर जो है, वो डेटाबेस में रिव्यू करता है, और उसमें कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है, डिज़ाइन, असेस और एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरफेसेस, और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई और पॉइंट ऐड कर दिया, उसने कंपैरेबिलिटी का ऐड कर दिया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसने प्रॉफिटेबिलिटी को टेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क रिव्यू, इसके अंदर कंपैरेबिलिटी, फिजिकल कंट्रोल्स, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, उसके एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के फर्दर हमारे पास आ जाता है फायर, स्मोक, क्लाइमेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद लॉजिकल कंट्रोल्स में हमारे पास पासवर्ड्स, फिजिकल पोसेशन आईडी, बायोमेट्रिक आईडीज़ आ जाती हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन में हमारे पास यूजर प्रोफाइल्स, आइडेंटिफिकेशन, ट्रस्टेड पाथ्स, फायरवॉल्स, वॉइस प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, क्रिप्टोग्राफिक की मैनेजमेंट, इंसिडेंट हैंडलिंग, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है आईएस ऑपरेशन रिव्यू, इन विच द ऑडिटर रिव्यू file handling procedures, data entry controls, lights out operations, computer operations. और कंप्यूटर ऑपरेशंस में फर्दर हमारे पास आ जाता है रिस्ट्रिक्टिंग ऑपरेटर एक्सेस कैपेबिलिटी, scheduling, executing, rerun handling, librarian access capabilities, content and location of offline storage. फर्दर हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर रिव्यू, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखना है कि ऑडिटर किस जगह पे कौन-कौन सी चीज़ें एग्जामिन कर रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रिव्यू में ऑडिटर एग्जामिन्स सिलेक्शन प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस एक्टिविटीज, सिक्योरिटी, चेंज कंट्रोल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिड रिव्यू। ये क्या होता है? A transaction constitutes a sequence of transaction interactions with the database that represent some meaningful activity to a user. However, a transaction must have four properties. कि ये कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कंसिस्ट कर रही होती है सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शंस पे, और वो इंटरेक्शंस किसके साथ होती हैं? डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स some meaningful activity to user. However, a transaction must have four properties. अब ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है? ऑटोमेसिटी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। एटॉमिसिटी में हमारे पास आ जाती है मीन्स दैट होल और नथिंग, अ ट्रांजिशन इज ईदर committed or rolled back, there is no middle ground. Consistency में हमारे पास आ जाता है a transaction that must preserve the consistency of the database that affects transactions are not reflected in the database until it commits its result. Isolation. The events that occur within an organization must be transparent to its transactions that are executing concurrently. In other words, no type of interface among transactions can be permitted. Durability means that once a transaction is committed, its changes will be permanent. क्योंकि हम लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन है वो हम लोगों ने कमिट की, तो उससे जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट होंगे। दिस मीन्स दैट इवन इफ देयर इज अ पार फेलियर और अदर सिस्टम क्रैश, द चेंजेस विल नॉट बी लॉस्ट। अच्छा, तो वो अज़ान हो रही है, उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लाइट्स आउट ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अब हमने यहाँ स्टार्ट करना है लाइट्स आउट ऑपरेशन से। A lights out data center is an isolated server room that is managed remotely. यानी कि एक ऐसा आइसोलेटेड सर्वर रूम होगा जिसे हम रिमोटली कहीं पर भी बैठे हम लोग उसको मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। लाइट्स आउट ऑपरेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग अ डाटा सेंटर रिमोटली विद मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। उसके अंदर ह्यूमन का कोई इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता, कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता ह्यूमन का, जो हम रिमोटली उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ लाइट्स आउट ऑपरेशंस।
continuous operation 24/7 reduction in system errors and interruptions, क्योंकि ह्यूमन का इतना इंटरेक्शन ही नहीं है तो उसमें एरर्स जो है सिस्टम में तो इतना नहीं होता। कोई इन केस अगर कोई उसके अंदर कोई वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो सकता है, उसकी प्रोग्रामिंग में अगर कोई एरर है। अदरवाइज़ सिस्टम में कोई इतना एरर नहीं होता, ह्यूमन एरर हो सकते हैं कोई ना कोई, तो जब ह्यूमन की इतनी इंटरेक्शन ही नहीं है, तो सिस्टम में एरर की रिडक्शन होगी। Less theft and other data security breaches, a more efficient use of IT resources, lower insurance and operational cost, better response time, geographical independence, excellent environmental protection due to climate control features. इसके बाद input and output control functions. Input output controls are a set of procedures in software that manage the flow of data between computer and its peripherals. Input and output controls are responsible for tasks such as acquiring data from input devices, storing data in memory, providing data to output devices, managing input-output errors. Input controls क्या होते हैं? Input controls procedures must ensure that every transaction to be proceed and recorded accurately and completely. इसमें क्या होता है कि इनपुट कंट्रोल्स जो है इस किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो रिसीव हो गई हैं, वो प्रोसीड हो गई हैं और वो रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं और वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुई हैं। अच्छा, दीज कंट्रोल्स शुड इंश्योर दैट only valid and authorized information is input and that these transactions are proceed वन ओनली वंस। ये ट्रांज़ैक्शन सिर्फ़ एक दफ़ा में प्रोसेस होती हैं और ये इसको ये इंश्योर किया जाता है कि ये सारी वैलिड है और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑथराइज़्ड भी है। अच्छा, इनपुट कंट्रोल्स टेक्निक्स भी हमारे पास दी हुई है यहाँ पे जिसमें ट्रांज़ैक्शन लॉग, ट्रांसमिशन लॉग, reconciliation of data, documentation of users, error correction procedures, cancellation of सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद इसके अगर कुछ इसमें एरर्स आ जाते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो देखेंगे। इनपुट error handling can be proceed as rejecting all the transactions with errors, कि सिर्फ उन transactions को हम लोग रिजेक्ट कर दें जिनके अंदर हमें एरर नजर आ रहा है। rejecting the whole batch of transactions, कि अगर पूरे बैच में कोई मसला है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। accepting batch in suspense, यानी कि वो अक्सर आप लोगों ने अकाउंटिंग में देखा होगा ना कि हम लोग सस्पेंस का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, तो उसमें हम लोग इस एडजस्टमेंट कर देते हैं। वो वाली बात आ जाएगी इसमें। एक्सेप्टिंग बैच एंड फ्लैगिंग एरर ट्रांज़ैक्शंस की अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम फ्लैग कर देते हैं कि ताकि वो आइडेंटिफ़ाई हो जाए, उसको आइडेंटिफ़ाई करना ईज़ी हो जाए कि यहाँ पे एरर है कोई। अच्छा, इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। रिजेक्टिंग ओनली ट्रांज़ैक्शंस विद एरर्स, ओनली ट्रांज़ैक्शंस कंटेनिंग एरर्स वुड बी रिजेक्टेड, द रेस्ट ऑफ द बैच वुड बी प्रोसीड, यानी कि जिस ट्रांज़ैक्शन में मसला है सिर्फ़ उसको रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ जो बाकी बैच है उसको प्रोसेस कर देंगे। अच्छा, रिजेक्टिंग द होल बैच ऑफ ट्रांज़ैक्शन, एनी बैच कंटेनिंग एरर्स वुड बी रिजेक्टेड फॉर करेक्शन प्रायर टू प्रोसेसिंग, कि हम सारे को रिजेक्ट कर देंगे कि जब उसकी प्रोसेसिंग दोबारा से हम लोग को करनी पड़ेगी पूरे के पूरे बैच की। उसके बाद एक्सेप्टिंग बैच इन अ सस्पेंस, एनी बैचेस कंटेनिंग एरर्स वुड नॉट बी रिजेक्टेड, हाउएवर द बैच वुड बी पोस्टेड टू अ सस्पेंस पेंडिंग करेक्शन, कि हम लोग उसको पेंडिंग करेक्शन में भेज देंगे। जब वो सही हो जाएगा तो हम उसको दोबारा से उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, अदरवाइज़ हम उस सारे को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक्सेप्टिंग बैच एंड फ्लैगिंग एरर ट्रांज़ैक्शंस, तो वो क्या करेंगे, एनी बैच कंटेनिंग एरर्स वुड बी प्रोसीड, हम उसको प्रोसीड कर लेंगे। पहले हम लोगों ने क्या किया, जो ट्रांज़ैक्शन गलत थी उस जिसमें एरर था उसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पूरे बैच को हमने रिजेक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे बैच को रिजेक्ट कर लिया कि इसके अंदर करेक्शन होगी तो फिर इसकी प्रोसेसिंग होगी। फिर हम लोगों ने बैच को सस्पेंस में किया कि हम लोगों ने जो बैच था उसके अंदर एरर थे उसको हम लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उसको सस्पेंस में भेज दिया कि इसकी करेक्शंस जो है वो पेंडिंग है, जब वो हो जाएँगी तो फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, हम हमारे जिस बैच में एरर था हम लोगों ने उसको प्रोसेस कर लिया। एंड हाउएवर दोज़ ट्रांज़ैक्शंस कंटेनिंग एरर्स वुड बी फ्लैग्ड, और जो ट्रांज़ैक्शन जिसके अंदर कोई एरर था उसको हम लोगों ने फ्लैग कर दिया फॉर आइडेंटिफिकेशन इनेबल सब्सीक्वेंट एरर करेक्शन, ताकि उनकी हम लोग बाद में सब्सीक्वेंटली उनकी एरर की करेक्शन कर लें। ठीक है? उसके बाद डाटा फाइल कंट्रोल प्रोसीजर्स, फाइल कंट्रोल शुड इंश्योर दैट ओनली authorized process authorized processing occurs to store data before and after image reporting, maintenance, error reporting and handling, source documentation retention, internal and external labeling, version usage,
Data file security, one-for-one checking, transaction logs, file updating and maintenance authorization, पार्टी चेकिंग। तो इस तरह को भी आप लोगों ने क्रैम कर लेना है। उसके बाद आगे हमारे पास आउटपुट कंट्रोल्स। आउटपुट कंट्रोल्स प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द डेटा डिलीवर्ड टू द यूजर विल बी फॉर्मेटेड, डिलीवर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सिक्योर मैनर। कि यानी कि आउटपुट में क्या हो गया, हमारा जो डाटा था वो हमारे यूजर के पास चला गया, तो हमने देखा कि उसकी फॉर्मेटिंग सही होती थी, वो उस तक डिलीवर हो गया और वो एक कंसिस्टेंट और सिक्योर मैनर में गया उसके पास कि नहीं। तो इस ये सारी जो एश्योरेंस हम लोगों ने करनी थी, इसको हम कहते हैं आउटपुट कंट्रोल्स। Output controls include the following: logging and storage of negotiable, sensitive, and critical forms in a secure place. Computer generation of negotiable instruments, forms, and signatures. Report distribution, balancing and reconciliation. Output error handling. Verification of recipient of reports. Output report retention. और इसी के साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्दर हम लोगों ने मूव करना है अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास दिया हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देयर आर थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके कुछ की एलिमेंट्स हैं, कुछ की फैसिलिटीज हैं। और उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कुछ रोल्स हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी कमेटी, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा ऑनरशिप। डाटा ऑनरशिप में भी हमें फर्दर चीजें दी हुई हैं: डाटा सिक्योरिटी, क्वालिटी, कंप्लायंस। डाटा ऑनर्स दिए हुए हैं, डाटा कस्टोडियंस। उसके बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा यूजर्स। ये हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर क्राइम इश्यूज एंड एक्सपायर्स। उसके कुछ बिजनेस थ्रेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। उसके बाद लॉजिकल एसेस एक्सपायर एंड कंट्रोल्स, लॉजिकल एसेस वॉलेटर्स, लॉजिकल एसेस एक्सपायर्स। उसकी आगे फर्दर टाइप्स दी हुई हैं। उसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ये थोड़ा सा लेंथी है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। कंप्यूटर वायरसेस के बारे में बताया हुआ है, एंटीवायरस क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, काफ़ी लेंथी है हमारे पास, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। स्टिल इट्स गोइंग। और मेरे ख्याल से सिर्फ यही लेंथी है, चैप्टर नंबर 10 हमारे पास इतना लेंथी नहीं होगा। एक दफ़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। और ये देखें, यहाँ पे जाके हमारे पास ये खत्म हो रहा है, आई थिंक सो 122 पेजेस तक। और इसके फर्दर हमारे पास चैप्टर नंबर 10 रहेगा। तो चैप्टर नंबर 10 तो इतना बड़ा नहीं है, तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारे पास कुछ ज़्यादा लेंथी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने करना तो है क्योंकि सुबह पेपर है, तो अब तो हमें करना ही पड़ेगा। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा सारी रीडिंग हो जाएगी तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा। मैक्सिमम जो है इसमें से 10% का टेस्ट कर लेंगे, वो ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब मैंने तो एक रफ सा अंदाज़ा किया कि 40% टोटल है इन 4 चैप्टर्स का, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है 10% ईच हो जाएगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ये नाम से क्या समझ आ रही है कि हमारी इंफॉर्मेशन होगी, उसको हम लोगों ने सिक्योर करना है और उसको हम मैनेज कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। Information security management is the process of protecting an organization's information assets from unauthorized access, use, display and disruptions, modifi- modifications and destructions। वही बात कि हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन थी उसको सिक्योर करना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से उससे उसकी एक्सेस ना ले, उसको यूज़ ना करे, उसको डिस्क्लोज़ ना करे, उसमें मॉडिफ़िकेशंस ना ऐड कर दे। उसके बाद हमारे पास इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। Confidentiality में refers to keeping information private and secure from unauthorized access. Integrity refers to ensuring that information is accurate and has not been tampered with. Availability refers to ensuring that information is accessible to authorized users when they need it. These objectives are often referred to as a CIA trade. C stands for confidentiality, I stands for integrity, and A stands for availability. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट। पॉलिसी में अक्सर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है।
that sets out the organization's overall approach to information security. It is the responsibility of the top management of an organization. इसके कुछ key elements में यहाँ पे दिए हुए हैं: purpose of policy, scope of policy, security objectives, roles and responsibilities of staff with respect to information security, procedures for implementing and maintaining security controls, procedures for responding to security incidents, procedures for auditing and monitoring the effectiveness of security controls. इसके बाद हमारी कुछ की फैसिलिटीज हैं। अच्छा, पॉइंट्स वैसे ही हैं जैसे एज यूजुअल के हम लोगों ने पढ़ने सारे हैं, और क्रैम करने के लिए हम लोगों ने कोई से ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट्स जो है उनको क्रैम कर लेना है। अच्छा, की फैसिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट सपोर्ट एंड कमिटमेंट। एक्सेस टू कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस, और उसके बाद कंप्लायंस विद रेलिवेंट लेजिस्लेशन का हम पता है, हमें पता है कि लॉ की बात कर रहा है वो, अगेन लॉज एंड रेगुलेशन की। उसके बाद रिटन एक्सेस ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल शुड बी इवेलुएटेड रेगुलरली, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट रूल्स। अब इसमें रूल्स कौन कौन से आ जाते हैं, वो है हमारे पास सिक्योरिटी कमेटी, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा ऑनरशिप। वन बाय वन देखते हैं। सिक्योरिटी कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ लोगों का ग्रुप होता है कमेटी में, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना है। They typically meet regularly to discuss the security threats and vulnerabilities and to develop and implement security policies and procedures. So basically ये लोग रोज इकट्ठे होते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, हम लोगों ने किस तरह से उसको ओवरकम करना है और किस तरह से उसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को क्रिएट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इज एन IT professional responsible for the security of an organization's computer systems and networks. He implements, monitors, and enforces the security rules that management has established and authorized. ठीक है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे पास कुछ आईटी प्रोफेशनल होते हैं, और वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्यूटर सिस्टम है और जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करना होता है। ही इम्प्लीमेंट्स, मॉनिटर एंड एनफोर्सेस द सिक्योरिटी रूल्स दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑथराइज्ड। उसके बाद डाटा ऑनरशिप की बात कर लेते हैं। डाटा ऑनरशिप इज द कांसेप्ट ऑफ असाइनिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डाटा टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल और टीम। कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डाटा है जो उसको हम क्या करते हैं, एक टीम के सपोर्ट कर देते हैं या एक इंडिविजुअल की सपोर्ट कर देते हैं कि अभी उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर नंबर ऑफ रीजंस, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें हमें यहाँ पे कुछ दी हुई है। इसमें से डाटा सिक्योरिटी, डाटा क्वालिटी और डाटा कंप्लायंस जो है ये तीन हमें दी हुई है। Data security helps to ensure that there is a single point of contact for managing securing data. Data quality helps to ensure that the data is accurate and up to date. Data compliance helps organization to comply with the regulations that government the collection, govern the collection, use and storage of data. उसके बाद हमारे पास डेटा ऑनर्स। डेटा ऑनर्स इज एन इंडिविजुअल और टीम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा सेट। द रिस्पांसिबिलिटीज इंक्लूड, यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने इनकी रिस्पांसिबिलिटीज देखनी है क्योंकि डेटा ऑनर्स की डिफाइन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी एंड यूज ऑफ डाटा, एस्टैब्लिशिंग डाटा गवर्नेंस पॉलिसीज, overseeing data quality and security, ensuring compliance with regulations, work with data custodians, managing data retention and disposal, auditing data usage। इसके बाद हम लोगों ने डाटा कस्टोडियंस की बात करनी है कि वो क्या होते हैं। Data custodians में हमारे पास आते हैं। These people are responsible for storing and safeguarding the data and include information system personnel such as systems analysts and computer operators। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं। These are responsible for, मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोगों ने यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप लोग याद रखना है कि डाटा कस्टोडियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की क्या है, डाटा यूजर्स कौन होते हैं, मतलब आप लोगों ने ये चीजें थोड़ी बहुत क्रैम करनी है और समझनी है। These are responsible for providing data security administrator. These are responsible for providing adequate physical and logical security for information system programs, data and equipment. उसके बाद data users. These are people often referred to as end users. They are the actual users of the computerized data. Their levels of access into computer should be authorized by
Data origins and restricted and monitored by the security administrator. Further हमारे पास यहाँ पे है computer crime issues and expiries. Committing crimes that exploit the computer and the information can be damaging to the reputation, morale, and very existence of an organization. Threats to business includes अब business में कौन कौन से threats हैं उनको देख लेते हैं. Financial loss, legal representation. Wait a second. Replications, legal replications, the loss of credibility or competitive edge, blackmailing, threatening to exploit the security breach, industrial espionage, organized crime, disclosure of confidential, sensitive or embracing information. और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है यहाँ पे sabotage. उसके बाद implementation of logical, physical, and environmental security measures have to protect the privacy, security, and confidentiality of systems, information, and information resources from unauthorized access. Further, हमारे पास आ जाता है logical access expiries and controls. Logical access controls is a security measure that restricts who can access a system or network and what they can do once they are there. यानी कि ये कुछ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ये ऐसा एक सिक्योरिटी मेजर होता है कि जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है कि कौन सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकता है, कौन नेटवर्क तक पहुंच सकता है और वो वहां पहुंच के क्या कर सकता है. ठीक है. It is a subset of information security and is often used in conjunction with physical access control to protect sensitive data. Logical access violators, इसको देख लेते हैं. Predators भी कह सकते हैं, predators in computer crimes are often the same people who exploit physical exploit, although the skill needed to exploit logical exploits are more technical and complex. Basically यहाँ पे आप कह लें कि एक तरह से उन criminals की थोड़ी बहुत हौसला अफजाई भी हो गई है, मतलब उनकी थोड़ी तारीफ हो गई है. वो किस वे में कि ये जो होते हैं ये इस तरह के पर्सन होते हैं, ये जो प्रीपेट्रर्स होते हैं, ये बेसिकली कंप्यूटर क्राइम्स करते हैं, ये लोगों की इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है और ये बहुत टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स किस्म का काम होता है. एंड पॉसिबल प्रीडेटर्स इंक्लूड हैकर्स, स्क्रिप्ट किडर्स, एम्प्लॉयज, IS personnel, end users, former employees, vendors, consultants, opportunities, accidental ignorance, interested outsiders. और वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें कॉम्पिटिटर्स होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, फ्रैंकर्स होते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम एंड टेम्परेरी पर्सनल आ जाते हैं इसके अंदर. उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल एक्सेस एक्सप्लोयर्स की. लॉजिकल एक्सेस एक्सप्लोयर्स आर vulnerabilities that allow unauthorized users to gain access to computer systems or networks. They include Trojan horses, any malware that misleads users of its true intent by discussing itself as a standard program. ट्रॉय मूवी की एग्जांपल ले सकते हैं आप यहाँ पे. उसके बाद जी राउंडिंग डाउन involves remove decimal places from money from a computerized transaction and bring it to the nearest whole number and rerouting its amount to the predator's account. Since the amount are also small, they are really noticed. उसके बाद आ गया सलामी टेक्निक in which the attackers makes small incremental changes to a system over time in order to steal money or data. Computer viruses, a type of malware that spreads between computers and causes damages to the data and software. Computer worm, a type of malware that can replicate itself and spread from one computer to another without need of human interaction. वो जिस तरह होता है ना कि एक वो किसी भी गंदम को जिस तरह एक फसल है उसको कीड़ा लग गया तो वो उसके लिए कोई इंट्रैक्शन नहीं है कि वो वहां पे उसके लिए वही ह्यूमन जाएगा, वो एक फॉर्म को उठाएगा दूसरी जगह पे रखेगा उसकी रिकॉर्ड, फिर वो अगली फसल तक पहुंचेगा. नहीं, वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है. तो सेम एज इट इज कि इसके अंदर भी जरूरत नहीं होती कि कोई एक ह्यूमन इंट्रैक्शन हो तो फिर ये फॉर्म जो है दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा, ये भी अपने आप उठ के दूसरे कंप्यूटर तक चला जाता है. लॉजिक बॉम्ब्स, अ टाइप ऑफ malicious code that is hidden
in a computer program designed to execute when a specific condition is met, such as when a certain employee is terminated or when a specific date is reached. उसके बाद हमारे पास आ जाता है asynchronous asynchronous attack. Asynchronous attack क्या होता है? A type of computer security attack that takes advantage of the fact that different components of computer system may not be synchronized with each other. उसके बाद हमारे पास आ जाता है data dead deadline, where a person intentionally enters a wrong information into a computer system. Wiretapping involves eavesdropping or information being transmitted over telecommunications lines. Piggybacking, a security vulnerability that allows an unauthorized user to gain access to a network or system by following an unauthorized user through a secured access point. But हमारे पास आ जाता है logical access control software. The purpose of control software is to prevent unauthorized access and modification to an organization's sensitive data and use of system critical functions. General operating system access controls functions are यहाँ पे हमें कुछ दिए हुए हैं वो apply user identification and authentication mechanisms, restrict login IDs to specific terminals and specific times, establish rules for accessing to specific information resources, create individual accountability and audibility, create or change user profiles, log events, log user activities, report capabilities. इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटाबेस एंड एप्लीकेशन लेवल एक्सेस कंट्रोल फंक्शंस. इसमें हमारे पास आता है create or change data files and database profiles, verify user authorization at the application and transaction level, verify user authorization within the application, verify user authorization at the field level for changes within a database, verify subsystem authorization for the user at the file level, log database data communication access activities for monitoring access evaluation. उसके बाद हमारे पास in summary access control systems of access control software is provided at the different levels within an information system architecture where each level provides a certain degree of security. Further हमारे पास आ जाता है auditing logical access controls. When evaluating logical access controls, the IS auditor should assess security risk of information processing by reviewing documents and techniques, evaluating controls over access paths to assess their adequacy, efficiency, and effectiveness, evaluate access control environment by analyzing test results and audit evidence. उसके बाद हमारे पास आता है interviewing system personal and reviewing organizational charts and job descriptions. Further, Microsoft the interview end user to assess their awareness of management policies, reviewing application systems, operations, manual, and reports from access control software. Further, identification and authentication की बात आ जाती है. Identification is the ability to identify uniquely a user of a system, while authentication is the ability to prove that a user is genuinely who that person or what the application claims to be. ठीक है, उसके बाद each of these technique is described in detail below. अब हमने इसको डिटेल में देख लिया. अब बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन क्या होती है ये बताने की इतनी जरूरत नहीं है कि आप लोगों को खुद भी पता है कि इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल नजर आ रही है लॉगिन आईडीज एंड पासवर्ड की. ठीक है, तो इसके अंदर पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पर्सन क्या हम लोगों ने उसको इतनी क्या उसे कह सकते हैं हमने उसको इजाज़त दी हुई है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर एप्लीकेशन को यूज़ करके कोई ना कोई काम कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास पहली एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है कुछ टेक्निक्स में लॉगिन आईडीज़ एंड पासवर्ड. ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पोर्टल की भी एग्जांपल आ जाती है. लॉगिन आईडीज़ एंड पासवर्ड. द लॉगिन आईडी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन. द पासवर्ड प्रोवाइड्स इंडिविजुअल ऑथेंटिकेशन. Authentication is a two-step process by which computer system first verifies that the user has a valid login ID and then requires the user to substantiate his validity via a password. उसके बाद इसका फॉर्मेट देख लेते हैं.
इसको फॉर्मेट सिंटैक्स रूल। फीचर्स ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड के फीचर्स क्या होने चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि वो थोड़ा लेंथी होना चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि कोई हैकर अगर उसे हैक करना चाहे तो उसको ना पता लग सके। थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए, यूनिकनेस आनी चाहिए इसके अंदर। अवॉइडिंग कॉमन पासवर्ड्स, मतलब 1 2 3 4 1 1 2 2 3 तो इस किस्म के पासवर्ड नहीं होने चाहिए। और हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे उसको चेंज करते रहना चाहिए। वैसे इतना भी रेगुलर ना करें कि आप लोग भूल जाए अपना पासवर्ड, तो वो उसको रेगुलरली बेसिस पे फिर भी चेंज कर देना चाहिए। हर दफ़ा एक ही पासवर्ड, और अवॉइड किया करें कि एक ही पासवर्ड को हर जगह पे इम्प्लीमेंट भी ना करें। ठीक है? काफ़ी दफ़ा लोग तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का भी चल जाता है। तो इसलिए अवॉइड किया करें कि हर जगह का पासवर्ड काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो, लेकिन उसके अंदर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, कुछ अल्फ़ाबेट को लोअर केस कर दिया, अपर केस कर दिया, उस तरह करके डिफरेंट कर दिया। अच्छा, वन बाय वन इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। लेंथ पासवर्ड शुड बी 5 to 8 characters in length, as anything shorter is too easy to guess and longer is too hard to remember. Complexity, password should allow for a combination of alphanumeric, upper and lower case, and special characters and symbols. Uniqueness, password should not be particularly identifiable with the user. मतलब इसके अंदर आप लोगों ने अपना नाम नहीं लिखना, या आपने किसी जानने वाले का नाम नहीं लिखना। अक्सर लोग लिख देते हैं, लेकिन वो इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। गेस करना आसान हो जाता है। अवॉइडिंग कॉमन पासवर्ड, पासवर्ड मस्ट नॉट बी कॉमन पासवर्ड दैट इज इजीली गेस्ड, सच एज पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 पोइट्री एटसेट्रा। उसके बाद जी हमारे पास चेंज पासवर्ड शुड बी चेंज रेगुलरली। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टोकन की बात, वन टाइम पासवर्ड। जिस तरह के हमें अक्सर ओटीपी मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड में। A token device or security token is a hardware disk that generates one-time password OTPs. For user authentication, OTPs are time-based, meaning they are valid for only a short period of time, typically 30 seconds to 5 minutes. उसके बाद biometrics आ जाते हैं। Biometrics is a method of identifying an individual based on their unique physical characteristics. For example, इसके लिए हमारे fingerprints की option आती है। ठीक है, उसके मोस्ट कॉमन टाइप्स आ गई। फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्निशन, पाम रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन, हैंड ज्योमेट्री, वॉइस रिकॉग्निशन, आइरिस रिकॉग्निशन, रेटिना रिकॉग्निशन। वन बाय वन इसको एक दफा बस रीड कर लेते हैं, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, where the user places his finger or scanner to get his fingerprints scanned. Palm recognition, where scanner analyzes rigid valleys and manage data found on the palm of the user. Facial recognition, biometric reader process an image captured by a video camera and analyzes the unique features of the person's face. Hand geometry, concerned with the measuring and measuring the physical characteristics of users' hand that figures from a three-dimensional perspective. और इसके बाद वॉइस रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज अ पर्सन वॉइस बाय इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. Iris recognition, based on the unique patterns of the iris, the color or part of the eye. Retina uses the optical technology to map the capillary pattern of eye's retina. कंप्यूटर वायरसेस की बात कर लेते हैं। आप कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ malware that attach itself to other programs, replicate itself, and spreads from one computer to another. Viruses can damage files, steal data, or disrupt computer operations. Voice controls क्या होते हैं? There are two major ways to prevent and detect viruses. The first is by having sound policies and procedures in place, and the second is by technical means, including antivirus softwares. Ne- Neither is effective without the other. अब इसके अंदर जो वॉइस कंट्रोल्स हैं, इसके हमारे पास 2 वेज़ होते हैं, प्रिवेंटिव और इसके बाद डिटेक्टिव वॉइस। कुछ हम डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ हम प्रिवेंट कर लेते हैं। द फर्स्ट इज़ बाय हैविंग साउंड पॉलिसीज़। कुछ में हमारे पास जो पहला है उसमें हमारे पास साउंड पॉलिसीज़ आ जाती हैं, प्रोसीजर्स इन प्लेस, एंड द सेकंड इज़ बाय टेक्निकल मीन्स। यानी कि डिटेक्शन जो है वो हमारे पास टेक्निकल मीन्स से होती है, और वो हमारे पास क्या होते हैं, इंक्लूड्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। उसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाता है। नीदर इज़ इफेक्टिव विदाउट द अदर। उसके बाद जनरली वॉइस अटैक्स 4 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। वो कौन-कौन से 4 ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जनरली वॉइस अटैक करता है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और 4 पॉइंट है, तो वो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में भी टेस्ट हो सकता है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स, फाइल डायरेक्टरी सिस्टम, boot and system areas,
बूट सिस्टम का पता होगा, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो उसके अंदर वो ऑप्शन दे रहा होता है कि अगर आप एक यहाँ कोई भी की है ना, वो वहाँ पे स्पेसिफाई कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे होती है ईएस ईएससी की, ठीक है? एग्जिट कह देते हैं आप उसको। वो वाली की अगर आप उसको प्रेस कर देंगे ना, तो आप लोग एक बूट में एंटर हो जाते हैं। उसके अंदर सिस्टम में जो उसके कुछ स्टार्टअप वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, या उसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, वो उस किस्म के कुछ डिफरेंट फंक्शंस वहाँ पे शो होते हैं। तो वहाँ पे भी ये वायरस अटैक करता है, एंड डाटा फाइल्स। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट प्रोसीजरल कंट्रोल्स। तो कुछ मैनेजमेंट प्रोसीजरल कंट्रोल्स होते हैं इसके लिए। वो क्या है कि वायरस ना अटैक करे। बिल्ड एनी सिस्टम फॉर फ्रॉम रीजन, क्लीन मास्टर कॉपीज, अलाउ नो डिस्क टू बी यूज्ड until it has been scanned। मतलब स्कैन के बगैर कोई भी डिस्क यूज ना हो। अपडेट वायरस सॉफ्टवेयर स्कैनिंग डेफिनेशंस फ्रीक्वेंटली। हम लोग उसको अपडेट करते रहे वायरस सॉफ्टवेयर को, जो उसको डिटेक्ट कर ले अगर कभी भी वो आता है तो। उसके बाद हैव vendors run demonstrations on their machines, not yours। तो उसके बाद scan software before its installation, consider encryption files and then decrypt them before execution, ensure that bridge, router, and gateway updates are authentic, review antivirus policies and procedures at least once a year, educate users so they will heed these policies and procedures। उसके बाद कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे पास। यूज वर्क स्टेशन विदाउट फ्लॉपी डिस्क, यूज बूट वायरस प्रोटेक्शन, यूज रिमोट बूटिंग, यूज अ हार्डवेयर बेस्ड पासवर्ड, यूज राइट प्रोटेक्टेड टैब्स ऑन फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद एंटीवायरस आ जाते हैं हमारे पास। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स कीप अ कंप्यूटर सिस्टम हेल्दी एंड फ्री ऑफ वायरसेस। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई इतनी ऐसे कुछ बताने वाली बात है। It should primarily be used as a preventive control unless updated periodically. Antivirus software will not be an effective tool against viruses. There are three main types of antivirus detection techniques: signature-based detection, behavioral-based detection, and machine learning. One by one इसको देख लेते हैं। Signature-based detection. A signature is a unique pattern of code that is associated with a specific piece of malware. Signature-based detection uses a database of known malware signatures to identify and remove malware. Behavioral database, behavioral based detection. Uh, by analyzing the behavior of a file rather than its code, it is discovered that new malware threats that have not been seen before. This looks for suspicious behavior in files and programs and blocks them if they exhibit malicious behavior. Machine learning. The latest evaluation in antivirus software involves the machine learning. It applies algorithms and huge data sets to detect malicious patterns and identify malware. उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे social engineering. Social engineering is a type of cyber attacks that uses human interaction to trick people into giving up their sensitive personal information or taking actions that compromise their security. Most common types of social engineering attacks include phishing, pretexting, quid pro quo। उसके बाद हमारे पास हो जाता है टेल गेटिंग, सीईओ फ्रॉड। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन आ जाता है स्केयरवेयर। और इसके अंदर एक एक्टिव एंड पैसिव अटैक भी होता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक दफा। Phishing, where attacker sends a message that appears to be from an legitimate source, such as bank or credit card company. The message will often contain a link that, when clicked, will take the victim to a fake website. Once the victim enters their personal information on the fake website, the attackers can steal it। कि मतलब इसमें क्या है कि फेक उन्होंने आपको एक लिंक भेज दिया, फेक मेल भेज दी। उस लिंक के थ्रू एक फॉर्म ओपन होता है, और उसके अंदर जब जो पर्सन है वो अपना डाटा एंटर करता है, तो उसका जितना भी डाटा होता है वो हैकर के पास चला जाता है, क्योंकि वो एक फेक वेबसाइट होती है। अच्छा जी, उसके बाद प्री-टेक्स्टिंग, where the attackers calls or emails the victim and pretends to be from a legitimate organization. The attackers will then ask the victim for personal information under the guise of verifying their identity and helping them with a problem। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम लोग को अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रही है।
फ्रॉड कह लेना, हम लोग इसको आम ज़ुबान में फ्रॉड कहते हैं, जबकि इसका नाम है प्री टेक्स्टिंग। कि अभी हम लोगों को कोई मसला नहीं होता और अक्सर हमें कॉल आ रही होती है, नहीं आप ना अपनी आइडेंटिटी जो है वेरीफाई कर दी, आप ये वाला कोड आएगा आपको, आपने वो हमें बता देना है, तो वो आपने डायल करना है, फिर इस तरह से आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा। तो ये वाली सारी जो है फेक कॉल्स आ रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक की तरफ से आती है, जबकि बैंक ने हमें कॉल नहीं की होती, ठीक है? वो बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह भी दे रहे होते हैं कि नहीं हम नहीं है, हम बैंक ही हैं और हम आपको कॉल कर रहे हैं। क्वाइड प्रो क्यू इन which the attacker promises something in exchange for information. For example, the attacker might offer the victim a free gift or discount if they provide their personal information. और आजकल ये भी फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, जी आपका गिफ्ट आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है, हमने आपका इनाम निकल आया, हम आपको गिफ्ट भेज रहे हैं, किस चक्कर में भेज रहे हैं भाई? हम लोगों ने तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया और उसमें बता रहे हैं आप इतने खुशकिस्मत हैं, आपने पार्टिसिपेट भी नहीं किया तो भी आपका गिफ्ट निकल आया भाई, पर ये बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। Tailgating, where the attackers follow an unauthorized person into a secure area. The attacker will often pose as a contractor और डिलीवरी पर्सन इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस। इसके अंदर क्या करते हैं कि वो आप लोगों को कर देते हैं कि हम कोई डिलीवरी पर्सन है, हमने आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो आप हमें अपना डाटा प्रोवाइड कर दें ताकि हम वो आपकी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन के थ्रू, अगर हम देखें आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, ठीक है? और इसी तरह आपका और भी डाटा ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पार्सल ही आ रहा हो तो उसके लिए भी आपसे इस तरह वो डील कर सकते हैं। क्या आप हमें अपना इन्फॉर्मेशन दे दें, तो हम आपका पार्सल आप तक डिलीवर कर देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप लोगों ने कोई चीज़ ऑर्डर नहीं की, आपको किसी ने कुछ सेंड नहीं किया, तो फिर आप लोगों ने कहीं पर भी अपनी इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। उसके बाद जी सीईओ फ्रॉड वो क्या होता है? Where the attacker impersonates a high-level executive and sends an email to an employee ordering to do specific activity. कि सीईओ फ्रॉड की जगह मतलब एक सीईओ है वो एक एम्प्लॉय को मैसेज कर रहा है, जबकि उसने किया भी नहीं बेचारे ने, कि उसको मैसेज करें कि तुम वो वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर दो, जबकि उसने तो सीईओ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो एक फ्रॉड था, एक स्कैम था। अच्छा, scareware, the attacker will often send an email that claims that the victim's computer is infected with malware and that they need to install a specific program to remove it. The program that attacker provides is actually malware itself. कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या आपको एक मेल रिसीव होगी कि नहीं जी आपका जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा malware आ गया, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने फ़ोन से वायरस को डिलीट करें। तो उसके लिए ये एप्लीकेशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो बेसिकली वो एप्लीकेशन अपने आप में एक वायरस होता है, ठीक है? तो आप लोगों ने ऐसी जो मेल्स हैं, ऐसी जो कॉल्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स। Passive attacks are used to steal sensitive information. For example, an attacker could use a passive attack to collect passwords, credit cards, numbers, or other confidential data that is being transmitted over a network. Active attacks are used to modify, destroy, or disrupt network traffic. For example, an attacker could use an active attack to inject a malicious code into a network or to deny service to legitimate users. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया सैनिटाइजेशन। ये क्या होता है? मीडिया सैनिटाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग डाटा फ्रॉम a storage medium so that it can no longer be recovered. ठीक है, बिल्कुल उसको इस तरह रिमूव कर देना कि हम उसको दोबारा रिकवर भी नहीं कर सकते। थ्री मेन मेथड्स ऑफ मीडिया सैनिटाइजेशन इज डाटा overwriting applications, data erasure is the process of overwriting the data on a storage medium with random data. This technique uses software to write random ones, zeros, and ones on every sector of the storage equipment, ensuring no previous data is retained. Magnetic degassing is simply a demagnetizing process to erase data from hard drive or tape. उसके बाद आ जाता है CD data destroy is the unlimited form of sanitization after media are destroyed. They cannot be reused as originally intended. इसके अंदर मीडिया वो वाला नहीं आपने समझना क्या जो सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं, वो वाले मीडिया की बात नहीं हो रही। वो वाला मीडिया होता है जो आप व्हाट्सएप का आप अपनी फाइल का एप्लीकेशन होती है, फाइल एप्लीकेशन हर फोन में जब आप उसको ओपन करते हैं वहां पे आप अपने जितना भी आपका स्टोरेज है पूरा मोबाइल का उसको ओपन करते हैं, उसमें आप व्हाट्सएप के फ़ोल्डर पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक मीडिया का फ़ोल्डर नज़र आता है।
तो उसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर आपकी पिक्चर्स इंक्लूड होती हैं, आपकी वीडियोज़ इंक्लूड होती है, तो ये उस मीडिया की बात हो रही है कि उसकी सैनिटाइज़ेशन करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है ताकि स्टोरेज जो है वो ज़्यादा स्पेस कवर ना करे, इसलिए हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? स्टोरेज क्लियर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिज़िकल एक्सेस एक्सपीरियंस एंड कंट्रोल्स। ये क्या होता है? Physical access expiries. Physical access expires are मैं थक गई वैसे expires are vulnerabilities that can allow unauthorized individuals to gain access to a facility or area. They can have a variety of negative consequences, such as damage or theft to equipment or documentations, copyright or viewing of sensitive or copyright information, alteration of sensitive equipment and information, public display of sensitive information, abuse of data processing resources, wiretapping और इसको वायर टिपिंग को हम कह सकते हैं एक सेकंड नेम है इसका एवज ड्रॉपिंग ब्लैकमेलिंग और इम्पेजलमेंट from an IS यानी कि information system perspective, facilities to be protected include a programming area, input-output control room, operator consoles and terminals, tape library, desk, and all magnetic media, storage rooms and supplies, offset backup file storage facilities. टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट माइक्रो कंप्यूटर्स एंड पीसीज लोकल एरिया नेटवर्क्स लैन आ गई इसके अंदर उसके बाद डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस पावर सोर्सेस फिर हमारे पास आ जाएगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज अ इसको पीएसी से भी आप लोगों को याद रखना है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज अ सिक्योरिटी मेजर दैट restricts so who has physical access to the facility or area common physical access control methods include key card and key cards and fobs, pin pads, biometric scanners, magnetic strip cards, combination locks, timed locks, motion sensors, video cameras, identification badges, security guards, alarm systems और उसके बाद डीडम्स डी डेडमैन डोर्स ठीक है डेडमैन डोर्स आ गए उसके बाद हमारे पास तो वन बाय वन इन सारी चीजों को देख लेते हैं कि ये क्या होती है ठीक है तो पहला हमारे पास आ गया की कार्ड्स एंड फॉब्स आर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कंटेन अ यूनिक आइडेंटिफायर pin pin pads require users to enter a personal identification number pin to gain access जैसा कि वो अक्सर होता है ना कि हम एटीएम पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पिन रिक्वायर्ड होता है पिन लिखेंगे तो फिर हम उसमें से पैसे वगैरह निकाल सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ गया biometric scanners uses physical characteristic to authenticate users यानी कि हम फिंगर अपनी रखेंगे थंब रखेंगे तो फिर ही उसके बाद ही मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स आर सिमिलर टू की कार्ड्स but they use a magnetic strip to store the user's identifier. Combination locks can be opened by entering a specific combination of numbers. Time locks are a type of lock that can be opened during certain time periods. उसके बाद वो बंद हो जाएगा और उसको ओपन नहीं किया जा सकता और कुछ इस तरह के लॉक्स भी होते हैं कि वो एक टाइम के बाद ना उनका पासवर्ड जो है वो अपने आप चेंज हो जाता है उसके बाद ये मोशन सेंसर्स आर डिवाइसेस दैट डिटेक्ट मूवमेंट video cameras should be fixed at strategic points and monitored by security guards. Identification badges, photo IDs should be worn and displayed by all personnel. Security guards are human security personnel who are responsible for preventing unauthorized entry. ठीक है इसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी गार्ड्स की भी बात कर दी उसने उसके बाद अलार्म सिस्टम्स आर यूज्ड टू alert security personnel for unauthorized entry or other security incidents जो अलार्म सिस्टम होता है हमारा कोई भी इस तरह की बात हो जाए तो अलार्म क्लॉक बज जाता है अक्सर वो आप लोगों ने देखा किसी मूवी में अगर चोरी हो जाती है ना चोरी हो जाने के बाद वो एक लेजर लाइट से एक बंदा गुजर गया तो उसी टाइम अलार्म बज गया ना वो वाला सिस्टम उसकी बात कर रहे हैं उसके बाद जी डेडमैन डोर्स also known as man traps or airlock entrance use pressure sensitive mechanisms to prevent unauthorized entry फॉर एग्जाम्पल एक ना बंदा है वो फ्लोर पे चढ़ रहा है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मूवीज की एग्जांपल ही मिलेंगी रियलिटी में हम लोगों ने कहा देखा है कि एक अनऑथराइज्ड एंट्री हुई है आधी रात को बंदा चोरी करने आया है उसने एक जगह पे पाँव रखा है जैसे उसने पाँव रखा उसको नहीं पता था वहां पे लेजर है उसने लेजर पे पाँव रखा वहां पे अलार्म बजा
और उसी सेकंड उसके ऊपर एक ना वो जिस तरह वो शिकारी ने नहीं लगाया होता, जंगला सा आके शिकार पे गिर जाता है, तो सेम एज़ इट इज़ वो बंदा वहाँ पे कैद हो जाता है, या फिर वो वहाँ से जो है वो फ्लोर की टाइल है वो पीछे हट जाती है और वो नीचे वहाँ पे कैद हो जाता है। वो इस किस्म का ना कोई सीन फ़िल्मी सीन सोचो ना, फिर ईज़ी हो जाएगा याद करना। उसके बाद ये एनवायरमेंटल एक्सपोज़र एंड कंट्रोल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, यहाँ पे हम कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोज़र्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इस वज़ह से हम फायर की बात करेंगे। उसके बाद फायर ही हो रहा है। अच्छा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, इंस्टॉल फायर अलार्म्स एट फायर suppression systems, smoke and heat detectors, control of combustible materials, automatic ex, uh, extinguishers, manual form-based extinguishers, उसके बाद fireproof, waterproof, safe for backup media, insurance coverage, regular fire drills, and after that, last one is training to staff to be alert against fire. उसके बाद fire suppression system. These systems are designed to automatically active after detection of high heat, typically generated by fire. Or typically fire suppression system includes a water sprinkling system. आपने अक्सर देखा होगा कि वो ना एक सिस्टम होता है जिसमें ना पाइपलाइंस ऊपर से गुजर रही होती हैं, और जब उसको ज्यादा धुआं फील होता है ना तो एक अलार्म क्लॉक बजता है। अलार्म क्लॉक बजते ही ना वो जो सी एक पाइपलाइन जा रही है उसमें से ना अपने आप पानी निकलने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है वो वाला पूरा सिस्टम ना फायर का। अच्छा, फॉर्म fire suppression systems, dry pipe sprinkling systems, wet chemical fire suppression system, dry chemical fire suppression system, gas fire suppression system. तो उसके बाद जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स एंड वेदर। अच्छा, फ्लड्स के अगेंस्ट ये तो हो गया ना, आग की बात कर ली, अब सैलाब की बात कर लेते हैं। केयरफुल सिटिंग ऑफ हार्डवेयर, रेगुलर बिल्डिंग मेंटेनेंस, मतलब बिल्डिंग जब हम लोग उसको थोड़ा ऊंचा ऊंचा बनाते जाएंगे ना तो तब भी के मतलब फ्लड से हम लोग बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास शेडलिंग, शील्डिंग, केबलिंग, उसके बाद फ्लड बैरियर्स, फ्लड वेंट्स, उसके बाद फ्लड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि मतलब कोई भी नागहानी सूरत हाल में इंश्योरेंस बहुत काम आती है कि खुदा ना खास्ता हमारा इस तरह का कोई मसला बनता है, कोई कुदरती आफत आती है, हमें से कुछ नुकसान होता है, तो हम इस वजह से फिर भी रिलैक्स फील करेंगे कि इंश्योरेंस हुई है। हम उनको प्रूफ देंगे भाई ये हमारे नुकसानात हुए हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आएगी और वो सारा हमें रिकवर करके चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर फेलियर्स, कुछ पावर फेलियर्स भी हो जाते हैं। Keep appliances and electronics in good condition, separate electrical supply, उसके बाद सोलर पावर, फ्रंट इंसुलेटर्स, बैकअप जनरेटर्स। तो मतलब यानी कि कोई पावर फेलियर हो जाता है, कोई पावर कट हो जाता है या लाइट चली जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कुछ करके रखा है, यानी कि उसके लिए हम लोग अगर घर में देखें तो हम लोगों ने यूपीएस लगाया होता है, हम लोगों ने कई कई घरों में सोलर लगा हुआ है, कई घरों में जनरेटर्स पड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल अटैक्स, कुछ फिजिकल अटैक्स हो सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या प्रोटेक्शन करनी है, शटर प्रूफ ग्लास, उसके बाद एक्सेप्टेड और सेग्रीगेटेड एरिया, स्टैटिक कंट्रोल मैट्स, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, वीडियो सर्विलेंस, और उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी पैरामीटर्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। उसके बाद जी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करते हैं। मेरे ख्याल से दिस वुड बी द लास्ट वन, लास्ट टॉपिक। ओके, फायरवॉल्स है हमारे पास अभी, फायरवॉल्स या डाटा इंक्रिप्शंस भी है। डाटा इंक्रिप्शन के बाद अभी तो ये बहुत चलेगा, काफी ज्यादा टॉपिक्स है अभी हमारे पास, तो यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग। डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी ये क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी बेसिकली नेटवर्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने सिक्योर करना है, यानी कि हमारा समझिए इस तरह हम लोगों ने कहा था ना हमारा क्लाउड में डाटा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, उसमें जो हम लोगों ने क्लाउड बैकअप रखा, तो वो उसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी की एक और लेयर ऐड कर दी और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको स्टोर किया। तो सेम एज इट इज हम लोग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी जो जो नेटवर्क है उसको किस तरीके से सिक्योर करना है, ठीक है, उसको हम लोगों ने देखना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई डिलीटेशन ना हो, या हमारे जो डाटा है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो चोरी ना हो जाए, ठीक है।
तो इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन organization from unauthorized access, modification, deletion, and theft of resources and data. The absence of network infrastructure security can lead to a number of risks, including loss of data confidentiality, loss of data integrity, denial of service, and system compromise. Loss of data confidentiality means data transmitted over a network is at risk of eavesdropping. Loss of data integrity, data may be modified in transit between network nodes deliberately or otherwise. Denial of service disconnection of a network link may prevent the system from providing service. System compromise. Networking devices such as routers, DNS servers, modems are at risk of compromise and their resources being used for such illegitimate processes. उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं methods used for network infrastructure security. There are many methods used for network infrastructure security. Some of the most common methods include firewalls, data encryptions, honeypots and honey nest. उसके बाद आ जाते हैं intrusion detection system IDS. उसके बाद SSO and digital सिग्नेचर. उसके बाद हमारे पास होता है फायरवॉल्स. फायरवॉल्स क्या होती है? ये हमारे पास एक नेटवर्क सिक्योरिटी का एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग अपना नेटवर्क जो है उसको सिक्योर करते हैं. उसके अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले जाए हमसे, तो उसके लिए हमारे पास फायरवॉल्स का सिस्टम होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें ना अपने लैपटॉप में, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन देता है, हमारा सिस्टम हमें कहता है कि ये मैंने डाउनलोड नहीं होने देना, ये सिस्टम ये सॉफ्टवेयर ये आप इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाला ऑप्शन बंद कर देते हैं. ठीक है, हम लोग इतने सियाने, हम ये ऑप्शन ही बंद कर देते हैं. A firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic by analyzing data packages based on predetermined security rules. Most common types of firewalls include packet filtering firewalls. वही ना कि हमारे पास पैकेट्स में आती है ना चीज, तो जिसको हम लोगों ने इंस्टॉल करना होता है, एक एप्लीकेशन होती है, वही फोल्डर में बनी होती है और उसको एपीके कह देते हैं, जो फोन में हम लोग इंस्टॉल करते हैं. जिस तरह सारे जीबी यूजर्स को पता होगा कि हम लोग गूगल पे जाते थे, वहां से एपीके डाउनलोड करते थे और उसके बाद हम उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते थे, और वहां पे भी हम लोगों ने आउटसोर्सिंग वाला ऑप्शन जो है वो बंद किया हुआ था. ठीक है, तो सेम एज इट इज वो फोन का फायरवॉल था. अच्छा, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, एप्लीकेशन लेवल गेटवेज, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स. तो वन बाय वन इसकी थोड़ी बहुत डिटेल देख लेते हैं. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, they examine the headers of network packets to examine whether they should be allowed to pass through the firewall. Stateful inspection firewalls, they track the state of network connection and they make more informed decisions about whether to allow traffic to pass through the firewall. Application level firewall, also known as proxy firewall, examine the content of the network packets and this allows them to block specific applications and service, even if the packets themselves are not malicious. नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में हमारे पास NGFW में क्या आ जाता है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में are a type of firewalls that combines the features of a packet filtering, stateful, and application fire level firewalls. And next generation firewalls also includes additional features such as intrusion detection and prevention that can help to protect a network from a wider range of threats. और कुछ कंपैरिजन आ जाते हैं इसमें एप्लीकेशन और स्टेटफुल इंस्पेक्शन में. अगर हम उसके बाद पैकेट फिल्टरिंग के भी आ जाते हैं. पैकेट वाला क्या है? वो सिंपल है, फास्ट है, मोस्ट एक्सपेंसिव है और लेस सिक्योर है और ऑर्डरिंग डिफिकल्ट है उसकी. एंड सी ओनली एड्रेसिंग प्रोटोकॉल टाइप. जबकि एप्लीकेशन में वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास नॉर्मल है, लेस एक्सपेंसिव है, सिक्योर भी है एंड कैन ऑडिट एक्टिवली एंड सी ईदर द एड्रेस एंड डाटा. और स्टेटफुल इंस्पेक्शन में हमारे पास मोस्ट ऑफ द कम्प्लेक्स सिस्टम ये आ जाता है. उसके बाद नॉर्मल है लेकिन एक्सपेंसिव है, मोस्ट सिक्योर, ऑडिटिंग पॉसिबल एंड सी फुल डाटा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन मतलब वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ऑप्शन होता है ना, जब हम किसी को मैसेज कर रहे होते हैं. इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच द मैसेज इज encrypted into keeper text that can't be read by unauthorized user. This is done by using an encryption algorithm and key. The encryption algorithm is a mathematical formula used to encrypt the data, and the key is secret piece of information used to decrypt the data. ठीक हो गया जी?
आगे हमारे पास आ जाती है इसकी जो मेन टाइप्स आ जाती हैं इंक्रिप्शन स्कीम्स की, वो कौन सी है जी? हमारे पास वो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। वन बाय वन इनको देख लेते हैं। Symmetric encryption uses only one key, a secret key, to encrypt and decrypt the data. This type of encryption is relatively simple to implement and is often used for encrypting small amounts of data. Symmetric key encryption is much faster than public key encryption, often by 100 to 1000 times. Asymmetric encryption क्या होती है? Asymmetric encryption uses two different keys, a public key and a private key. The public key is used to encrypt and the private key is used to decrypt the data. This type of encryption is more complex to implement but more secure than symmetric encryption क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक की थी ना, लेकिन इसके अंदर हमारे पास दो कीज आ गई। उसके बाद symmetric key and public key encryption are used often in conjunction to provide a variety of security functions for network and information security. उसके बाद हमारे पास हनी पोर्ट्स आ जाते हैं, हनी पोर्ट्स एंड हनी नेट्स। हनी पोर्ट इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज set up to attract and trap अटैकर्स। मतलब जिस तरह ना हम लोगों ने जाल बिछा के रखा है ना, तो इस तरह जो हम लोगों ने उन लोगों को ट्रैप करना है जो कि अटैक करते हैं। इट इज डिजाइंड टू लुक लाइक अ रियल सिस्टम बट इट इज एक्चुअली अ ट्रैप दैट कैन बी यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अटैकर्स एंड देयर मेथड्स। इसके अंदर हम देखते हैं अटैकर्स कौन है, वो किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीजें हम लोगों को देखनी है। हनी नेट, a honey net is a network of honey pots that is designed to look like a real network. Honey nets can be used to gather more information about attackers than honeypots, as they can be used to track attackers as they move through the network. यानी कि हनीपोट क्या था? वो हमारे पास एक सिस्टम था। हनी नेट में हमारे पास बहुत सारे सिस्टम इकट्ठे होकर नेटवर्क बना लिया उन्होंने, ठीक है। और इनका मकसद क्या था कि उन्होंने अटैकर्स को पकड़ना है और वो अटैकर्स जो मेथड यूज करते हैं उनको देखना है। उसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया है इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है? इन आईडीएस यानी कि intrusion detection systems gathers and analyzes information from various areas within a system or a network to identify possible security breaches, which include both intrusions, attacks from outside the organization, and misuse attacks from within the organization. Any intrusion activity is typically reported to the security administrator using security information and event management system. Intrusion detection functions include monitoring and analyzing both user and system activities, analyzing system configurations and vulnerabilities, assessing system and file integrity, ability to recognize patterns typical of attacks, analysis of abnormal activities patterns, tracking user policy violation. Of course, there are two main types of intrusion detection systems: signature based and anomaly based. Signature based क्या होता है? SIDS aims to identify patterns and match them with known signs of intrusion. Anomaly based aids कह सकते हैं हम इसको, aids analyzes the network traffic to detect deviations from normal behavior. उसके बाद हमारे पास आ जाता है intrusion prevention system. An IBS finds malicious activity in a network or a system that takes action to prevent it by reporting, blocking, or dropping it. It is the most advanced than an intrusion detection system. Three detection methods used by intrusion prevention systems are signature-based, anomaly, and stateful. Signature-based detection. It compares incoming traffic against a database of non-malicious signatures. If a match is found, the IPS will take action to prevent the malicious traffic from entering the network. Anomaly-based detection. It determines the normal network activity, like what sort of bandwidth is generally used, what protocols are used, what boards and devices generally connect to each other, and alter the administrator when traffic is detected, which is anomalous, not normal. Anomalous means not normal. Okay, stateful protocol analysis. It identifies deviations of protocol states by comparing observed events with the predetermined profiles of generally accepted definitions of being activity.
बिगिंग बीइंग एक्टिविटी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंगल साइन ऑन, एसएसओ एंड डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या होता है? Single sign-on (SSO) is a user authentication process that permits a user to enter one name and password in order to access multiple applications or websites. उसके बाद हमारे पास आ जाता है digital signature. A digital signature is a mathematical scheme for verifying the authenticity and integrity of digital messages or e-documents. A valid digital signature gives a recipient reason to believe that the message was created by a non-sender and that the message has not been altered since it was sent. While a digital signature gets the recipe. ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वायरलेस सिक्योरिटी। A wireless network refers to a computer network that make use of radio frequency RF connections between nodes and the network. Wireless security revolves around the concept of securing the wireless network from malicious attempts and unauthorized access by using wireless networks, which includes Wi-Fi networks. Principal ways to secure a wireless network. For closed networks like home users and organizations, the most common way is to configure access restrictions in the access points. Those restrictions may include encryption and checks on MAC address. For commercial providers, hotspots, and large organizations, the preferred solution is to have an open and unencrypted but completely isolated wireless network. There are four main wireless security protocols, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं वायर्ड। ये हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। वीईपी, वीपीए, वीपीए 2, वीपीए 3, और इसके साथ है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस, वायर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ कंपैरिजन आ जाते हैं, इसको आप लोगों ने खुद से एक दफा देख लेना है और इसके अंदर ये बाइट्स वगैरह भी याद कर लेने हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल देख लेना है। अच्छा जी, ऑडिट ट्रेल्स रह कितना गया, हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी ये। अच्छा, कंप्यूटर फोरेंसिक्स भी हम लोगों ने मतलब कंप्यूटर की जो ड्राइव्स वगैरह होती हैं वो वाले भी देख लेने हैं। उसके बाद अभी हमारा काफ़ी रहता है। ये क्या है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद हमारा खत्म था। 3 टॉपिक अभी हमारे रहते हैं इस चैप्टर में से और फिर जाके ये खत्म होगा। अच्छा जी, ऑडिट ट्रेल्स। An audit trail is detailed sequential record of activities that have taken place in a system or application and can be used to reconstruct events that have occurred in the past. An audit trail allows the auditors to investigate errors that they have discovered in more detail. Audit trail are not a substitute for good preventative security measures. Typical audit trail fields created date, updated by an updated date, station operator document, source, type of access, status, record of errors encountered. कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पे ऑडिट ट्रेल्स के दिए हुए: फ्रॉड प्रिवेंशन, एरर डिटेक्शन, इंटरनल कंट्रोल, improvement, financial statement verification, compliance with regulations, root cause analysis, forensic analysis used for system troubleshooting, continuous monitoring, score decision making। और उसके बाद हम चले जाते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स पे। मतलब इसमें कोई ऐसे कोई समझाने वाली बात ही नहीं है और समझने वाला ये टाइम नहीं है। Computer forensics is the application of investigation and analysis techniques to gather preserve evidence from a particular computing device in a way that is suitable for presentation in a court of law. Evidence collected assistance in arrests, protections, terminations of employment, and preventing future illegal activities like intellectual property theft. Examples of computer forensics include recovering thousands of deleted emails, performing investigation, post-employment termination, recovering evidences post formatting hard drive, performing investigation after multiple users had taken over the system. Who uses computer forensics? अब कौन कौन इसको यूज करता है वो देख लेते हैं। Criminal prosecutors, evidence obtained from a computer can be used to
prosecute suspects, civil litigations. Civil litigations, personal and business data discovered on a computer can be used in fraud, divorce, harassment, or discrimination cases. Insurance companies' evidence discovered from the computer can be used to modify the cost, fraud, workers' compensation, arson, etc. Private corruptions. Obtained evidence from employee computers can be used as evidence in harassment, fraud, and embezzlement cases. Government agencies use computer forensics to investigate national security threats, to track down terrorists, and to protect classified information. उसके बाद हमारे पास आ जाता है penetration testing. A penetration testing test is an authorized simulated cyber attack on a computer system performed to evaluate the security of the system. Two types of penetration testing are external and internal. These are designed to assess the security of an organization system and networks from different perspectives. Internal penetration testing is conducted from inside of an organization network. This type of testing simulates an attack from internal attackers such as employee or contractor. मतलब internal penetrating system testing है ना, तो उसमें जो internally attackers हैं उनके बारे में हम देखेंगे ना, उसके अंदर employees वगैरह आ जाएंगे. उसके बाद externally हम देखेंगे हमारे competitors आ जाएंगे उसमें. External penetrating testing is conducted from outside of an organization's network. This type of testing simulates an attack from external attackers such as hackers or cyber criminals, और ये सारा कुछ हमारे कंप्यूटर स्पीक करवा सकते हैं ना, कह के पैसे देके भी करवाया जाता है. These two types of testing have three variations. Black box penetration testing, in which the tester has no prior knowledge of the target system or network. The information about system is obtained from the public sources. This method simulates a real-world attack. White box penetration testing, for this system, related information is provided to the tester to assess the security against specific attacks. This is used when the company needs to get a complete audit of its security. Gray box penetration testing, in which the penetration tester has some knowledge of the target system or network, but not as much as they would in a white box test. It is time saving method and provides more detailed security assessment practice. तो इसी के साथ साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ये जो सा हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हैव थ्री वेरिएशंस. तो ये व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स जो है ना, ये आप लोगों ने इसको याद करना है, और ये उसके हवाले से एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ. आई थिंक सो लास्ट ईयर. हाँ जी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, द लास्ट वन. बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी. तो ये हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है, 122 पेज से स्टार्ट हो रहा है और 135 हमारा एंड हो जाएगा. तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 को. चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 को, द लास्ट वन. सॉरी, पता नहीं 11 है शायद, आई थिंक सो. चैप्टर नंबर 11. ओके, तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं कर आके अपने लास्ट चैप्टर पे. इसको स्टार्ट करते हैं. कॉन्टिन्यूटी, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी. तो डिजास्टर क्या होता है पहले इसको देखेंगे. Disaster can be any event that causes significant disruptions to an organization's operations. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो सही से काम जिस तरह के नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं वो वैसे नहीं चलते. A disaster may be caused by natural climates such as earthquakes, floods, tornadoes, thunderstorms and fire. इसके अंदर नेचुरल भी आ जाते हैं, एंड इवेंट्स परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स सच एज टेररिस्ट अटैक, हैकर अटैक्स, वायरसेस और ह्यूमन एरर. तो इसके अंदर कुछ ह्यूमन बीइंग्स की वजह से भी आ जाते हैं, एंड व्हेन एक्सपेक्टेड सर्विसेज such as electrical power, telecommunication and natural gas supply are no longer supplied to the company. घर में भी आजकल अगर गैस नहीं आती तो उससे कितने मसले चलते हैं, बिल्कुल भी कुछ नॉर्मल नहीं रहा होगा. तो उससे भी अंदाजा लगाएं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना फर्क पड़ेगा.
अच्छा जी, बिजनेस continuity planning is the process of creating a plan to help your business continue operating in event of a disaster. तो ये जो बिजनेस continuity planning होती है ना, ये इस तरीके में की जाती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई नेचुरली आता है, या कोई ह्यूमन की वजह से आ जाता है, कोई ह्यूमन एरर हो जाता है, या कोई अनएक्सपेक्टेडली कुछ सर्विस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है उसकी प्लानिंग हम लोगों ने करनी है। ठीक है। तो बिजनेस continuity प्लानिंग में हम लोग क्या देखते हैं, बिजनेस continuity plan is a documented set of procedures that defines how a business will continue to operate in the event of disaster. It should identify the critical functions of your business. How will you keep your those functions running, and how you will recover from the disruptions. Okay, planning for the coordinator service should consider prevention, detection, and correction. Prevention, what can be done to prevent the crisis from occurring? Detection, what can be done to ensure timely detection of the crisis? Correction, what can be done to respond and recover from the crisis? पहले प्रिवेंशन कर ली, प्रिवेंशन अगर फॉर एग्जाम्पल के हम लोगों ने कुछ भी गलत होने से पहले बचा लिया, उसके बाद अगर हो गया है उसको डिटेक्ट कर लिया और फिर देन हम लोगों ने उसको करेक्ट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया 5 phases of developing a business continuity plan. So पहला आ गया phase 1 get started, phase 2 identify business requirements, phase 3 develop recovery strategies, phase 4 execute the plan, phase 5 maintain the program. One by one इसको देख लेते हैं। Get started, assembling a business continuity plan team and defining the scope of the plan, identify and allocating the resources. Second, identify the business requirements. Conduct business impact analysis. Identify and document key business functions. Determine the impact of disruption on those functions. Calculate maximum tolerable downtime. यानी कि मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फैक्ट्री में अगर इतने देर तक काम नहीं चल रहा, तो कब तक हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे कि हाँ ठीक है, अब काम नहीं चल रहा तो हमने उसको बियर कर लिया। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली काम हमें कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट दे रहा होता है, तो वो डाउन टाइम की इतना सा लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो कितना है, वो टॉलरेबल जो है, हमारी बर्दाश्त की हद क्या है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया डेवलप रिकवरी स्ट्रेटजीज। डेवलप अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। कैलकुलेट रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव फॉर ईच की बिजनेस प्रोसेस। डेवलप, अगर फॉर एग्जांपल अगर सैलाब आ जाता है तो उसके लिए पानी आ जाएगा, तो तब वो हमारा डाउन टाइम होगा, तो हम कितना डाउन टाइम जो है हम टॉलरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हम लोगों ने उसकी रिकवरी किस तरह से करनी है, वो जो डाउन टाइम हम बर्दाश्त करें उसके अंदर हम लोगों ने उसकी रिकवरी करनी है। ठीक है। डेवलप डिटेल प्लान फॉर रिकवरिंग एंड क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस। Execute the plan. Putting the recovery plans into place and testing them in to ensure that they work. अच्छा, execute ये नहीं कि जब वो सर पे आफत आ गई है तो फिर हम लोगों ने काम करने नहीं, हम लोगों ने उससे पहले उसकी एक टेस्टेशन कर लेनी है, उसको एग्जीक्यूट करके देख लेना है कि अब हम उस तरीके से काम करके देखते हैं कि खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई इवेंट आता है तो फिर किस तरीके से काम होगा, सही भी होगा कि नहीं होगा, या हमें इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी। आइडेंटिफाई फंक्शंस वेयर MTD less than RTU require and allot more resources to bridge the gap. उसके बाद the last one, maintain the program. Regularly testing and recovery plans, monitoring the environment for potential threats. उसके बाद ये components of a business continuity plan आ गया। A business continuity plan should include disaster recovery plan, resumption plan, contingency plan, crisis communication plan, incident response plan, transportation plan, occupant emergency plan, evocation and emergency relocation plan. For the planning, implementation, and evaluation phase of the business continuity plan, the following should be agreed upon: the goals, requirements, products for each phase, alternate facilities to perform tasks and operations, critical information resources to deploy, individuals responsible for completion, available resources to aid in deployment, the scheduling of activities with priorities established. Further, हमारे पास आ जाता है business impact analysis. Business impact analysis (BIA) is a essential part of an organization's business continuity planning process, in which business identifies and assesses the impact of
disruption to its critical business processes and calculates downtime cost for each critical business area. For example, जिस तरह अगर हम लोग बात करें तो कोरोना के टाइम पे हम लोगों जो बिजनेसेस थे वो किस तरीके से रन हो रहे थे ना, तो उसकी भी जाहिर सी बात है कि उस दौरान में कुछ प्लानिंग की गई होगी, लेकिन वो कहाँ पे आया होगा हमारे पास, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे कि हम लोगों ने प्रिवेंशन करनी है, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन का पढ़ा था। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए डिडक्शन एंड देन करेक्शन। तो जो डिडक्शन थी, प्रिवेंशन तो हमें तो नहीं पता था कि कोई वायरस आएगा इस तरीके से, कोरोना आएगा। तो जब कोरोना आ गया तो उसकी हम लोगों ने डिडक्शन करी, उसके बाद अब हम लोगों ने उसके लिए कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेने थे ना, कि अब हम लोगों ने अपने बिजनेस को किस तरीके से प्लान करना है। ठीक हो गया। अच्छा, business impact analysis is an essential part of an organization's business continuity planning process, in which a business identifies and assesses the impact of a disruption to its critical business processes and calculates downtime cost for each critical business area. Some questions should be considered when conducting a BIA, business impact analysis. What is organization's critical business process? What is the impact of a disruption to each critical business processes? What is the RTO, recovery time objective, and RPO, recovery point objective for each critical process? What steps are needed to be taken to recover from a disruption? What resources are needed to recover from disruption? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास होंगे, तभी हम जो है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस कर सकेंगे। डाउन टाइम कॉस्ट, अब जाहिर है कि जैसा मैंने बताया कि अगर फैक्ट्री जो है वो काम उसका जब तक चल रहा है तब तक वो प्रॉफिट कमा रही है, जब फैक्ट्री का काम रुक गया मतलब कि वहां पर उनका प्रॉफिट स्टिल हो गया, तो इन नॉर्मल केस उनको तो प्रॉफिट होना था। तो अब जब प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस तरह का केस है कि कोई डिजास्टर हो गया, तो उसकी वजह से उनको कुछ लॉसेस होंगे, तो हम वो देखेंगे डाउन टाइम कॉस्ट। बेसिकली वो जो प्रॉफिट हमारा लॉस हुआ है ना, उसको हम डाउन टाइम कॉस्ट कहेंगे। डाउन टाइम कॉस्ट आर द losses that an organization incurs when its IT systems or other critical infrastructure are unavailable. Tangible or intangible में direct और indirect cost देख लेते हैं। Tangible means direct cost, intangible indirect cost। अच्छा, direct cost, cost revenue, lost inventory, remedial labor cost, marketing cost, bank fees, legal penalties for not delivering on service level agreements. Intangible, यानी कि indirect cost, lost business opportunities, loss of employees or employee morale, decrease in stock value, loss of customer goodwill, uh, loss of customer or goodwill, brand reputation damage, bad publicity, competitive disadvantage. फिर हमारे पास आ जाएगा सिस्टम रिस्क रैंकिंग। सिस्टम रिस्क रैंकिंग क्या होता है? सिस्टम रिस्क रैंकिंग is the process of assigning a level of risk to each function in an organization's IT infrastructure. This is done by assessing the likelihood and impact of a disruption to each function. The risk ranking is then used to prioritize the functions that are needed to be protected. There are four categories of functions in the risk assessment risk ranking: critical, vital, sensitive, and non-critical. Critical can't be replaced by manual methods. Tolerance of interruption is very low. Cost of interruption is very high. Vital can be performed manually, but only for a short period of time. Higher tolerance to interruption than critical functions. Cost of interruption is lower than the critical functions, but still high. Okay, sensitive can be performed manually for an extended period of time. High tolerance to interruption. Cost of interruption is lower. After then, there is a non-critical. Maybe may be interrupted for an extended period of time at a little or no cost, require little or no catching up when restored. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिजास्टर रिकवरी प्लान DRP. The next phase in the continuity plan development is to identify the various recovery strategies and select the most appropriate strategy for recovering from a disaster. Disaster recovery plan is a document set of procedures that identifies how an organization will recover from a disaster. Different strategies should be developed
and all alternatives should be presented to the senior management, who selects the most appropriate strategy from the alternatives, which should be used for further developing and the detailed business continuity plan. Here's are the selection of our recovery strategy would depend upon critically uh, critically of the business process and application supporting process, cost and security of the different recovery strategies, the time required to recover from a disaster. After there is steps in DRP include disaster recovery plan. There are steps. There are several steps. Five steps are there: identifying and mitigating the risk, backing up data, restoring the data, reconfiguring the system, testing the recovery procedures. The disaster recovery plan must include a communication plan that outlines how organization will communicate with its employees, customers, and other stakeholders during a disaster. RDO and RBO in DRB. इसमें ना ये जो इस तरह से एप्लीकेशंस लिखी होती हैं, ये इसका आपको तभी होगा कि जब आपको ये किसके लिए स्टैंड फॉर करती हैं ये पता होगा। फॉर एग्जाम्पल इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ऑन टाइम आपको तो नहीं याद आएगा कि आरटीओ, आरबीओ या डीआरबी क्या होता है। इसलिए आपको ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा कि रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में। Acha, calculation of RDO and RPO for each critical business process is an essential activity in DRP, disaster recovery planning. RBO and RDO are two important concepts in disaster recovery planning. They help organizations to define their acceptable levels of downtime and data loss in the event of disaster. RDO, Recovery Time Objective, also known as CRTP, Critical Recovery Time Period, or MTD, Maximum Tolerable Downtime, is the maximum amount of time that business process can be unavailable before it has a significant impact on organization. Recovery point objective is the maximum amount of data loss that an organization can tolerate. It represents the maximum period of time that can elapse between a data loss event and the restoration of that lost data. आरटीओ एंड आरपीओ। आरटीओ में क्या होता है कि जो टाइम हमारा डाउन टाइम चल रहा होता है वो कितना टॉलरेबल है हमारे लिए वो, और जो आरपीओ है उसके अंदर हम लोग देते हैं जो हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो गया और उसकी रिकवरी हम लोगों ने करनी है, ठीक है, वो आ गया। एक में हमारा टाइम गलत हो टाइम खराब हो रहा है और एक में हमारा डाटा खराब हो रहा है। आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम कि यानी कि उसके अंदर हम लोगों ने डाटा को रिकवर करने के लिए जो हमें टाइम लगेगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसके अंदर उस डिजास्टर को ओवरकम करने के लिए जो भी उसके समझिए एक तूफान था आगे गुजर गया तो उसके बाद नॉर्मल होने के लिए जो हमें टाइम लगेगा उसकी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आरडीओ एंड आरपीओ are measured in terms of time. The main purpose of RDO is to select a suitable recovery site, and while the main purpose of RPO is to select a suitable data backup approach. उसके बाद हमारे पास आगे हैं disaster recovery sites. Disaster recovery site is a facility that an organization can use to recover its IT infrastructure and critical operations when its primary data center is affected by a disaster. Recovery sites are often built in a remote location so as to ensure that the disaster which has affected the main site will not affect the secondary site as well. There are three main types of disaster recovery sites: hot site, warm site, cold site. One by one करके देखते हैं hot site क्या होती है। Hot site is a fully equipped operational facility that is located at a different geographical location from a primary site. It has the same hardware, software, and the data as the primary site. A hot site is expected to be always online and running. Means बहुत ज़्यादा यूज होती है वाली साइट, ठीक है, उससे आप लोग याद रखें कि ये hot site है। A warm site has the same hardware as the primary site, but it does not have the same software or data. Coal sites. A coal site is a facility that has no equipment or data. It has only the basic utilities such as electric power, cooling system, and communication equipment. यहाँ पे इनके कुछ differences दिए हुए हैं, इसको आप लोगों ने खुद से एक दफा पढ़ लेना है।
उसके बाद हमारे पास आगे है मोबाइल डिजास्टर रिकवरी साइट. A mobile disaster recovery site is a tailored or other transportable structure that contains the necessary equipment to restore IT operations in the event of disaster. These sites are typically used by organizations that don't have budget for a hard or warm site. A mobile site is complete with office facilities and computer equipment such as computer workstations, telephones, electrical power, office equipment, and supplies. Typical configuration includes preload hardware and software, network connections either by hardware or satellite, multiple telephone fax connections, soundproofing insulation, ceiling tiles, high output heating, ventilation and air conditioning system, fire protection system, multi-station workspace. Each is custom configured to user specification. After that, we have some major firms offering mobile recovery sites: IBM, AT&T, फाइबरकॉन और इस किस्म की ये दी हुई है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना एक दफ़ा है ना, ये वो एमसीक्यूज़ के बारे में आ सकती है कोई, कि कोई भी मोबाइल कभी सर्विस है, उसको आप लोगों ने आइडेंटिफ़ाई करना है। तो उस लिहाज़ में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे ख़्याल से तो यहाँ पे एज़ एन एग्ज़ाम्पल भी दी जा सकती है ये। अच्छा, considerations when selecting a mobile recovery service provider. The most important consideration in a business need, the other consideration include mobile recovery company experience and reputation, customer references, pricing and warranties, available hardware, software, and vehicle types, minimum and maximum configurations per trailer, time frame from disaster declaration to arrival of mobile services, location of mobile recovery facility, proximity to customer locations. उसके बाद कुछ हमारे पास इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं, वन बाय वन देखेंगे. एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल रिकवरी साइट्स, deployed very quickly, often within hours of disaster, deployed to any location, cost effective than traditional disaster recovery sites, scaled up or down to meet the needs of the business, used to test disaster recovery plans. Other than that, now we have some disadvantages of mobile recovery sites there. Greatest risk of data loss if the site is damaged or destroyed can be complex to set up and use, not to be able to accommodate all IT equipment, not be able to provide the same level of security as a traditional disaster recovery site. Other than now, we have reciprocal agreement. It is an agreement made by two or more organizations to use each other's resources during a disaster. This can include things like space, equipment, and personal. Some critical questions to cover in a reciprocal system there. How much time will be available at the host computer site? What facilities and equipment will be available? Will assistance be provided? How quickly can access be gained to the host recovery facility? Can data and voice communication links be established at the host site? How long can emergency operations continue? How frequently can the system be tested for compatibility? How will confidentiality of data be maintained? What type of security will be offered for information system operations and data? Are there certain times of the year, months, etc., when partners' facilities are not available? After that, now we have some contractual provisions. Contractual provisions for the use of third-party sites should cover the following: configurations, disaster availability, subscriptions per site, subscriptions per area, insurance, usage period, communications preferences, warranties, security, testing, and audit. One by one, करके इन सबको देखेंगे. Configurations are the vendors. Each W configurations adequate to meet the company needs. Is the definition of disaster broad enough to meet the anticipated needs? Availability. How soon after a disaster will facilities are available? Subscriptions per site. Does the agreement limit the number of subscriptions per site? Subscribers per area. Does the agreement limit the number of subscribers in a building or area? Insurance. Is there adequate insurance coverage for company employees at the backup sites?
Usage period. How long is the facility available for use? Communications. Are the communications connections to the backup sites are sufficient? Preference. Who gets preference if there are common or regional disaster warranties? What warranties will the vendor make regarding the availability and adequacy of the facility? Security. Can the site be adequately secured by a vendor to comply with company's security policy? Testing. What testing rights are included in the contract? Audit. Is there a right to audit clause permitting an audit of the site to evaluate the logical, physical, and environmental security? After that, now we have the data backup methods. Backup is the process of creating a copy of data to protect against accidental or malicious deletion, corruption, hardware failure, ransomware attacks, or some other types of data loss. Two major types of data backup approaches are there: traditional type or disk backup, or direct to cloud backup, cloud to cloud backup, and SA, SaaS backup. Okay, first let's read the traditional one. Day backup is the practice of periodically copying data from primary storage device to the tape cartridges for backup. Disk backup refers to the technology that allows one to backup large amount of data to disk storage units. After that, now we have to discuss the direct to cloud backup, cloud to cloud. With direct to cloud, offsite files backups are copied directly to the cloud, bypassing the need of for a local device. Cloud to cloud backup is the process of copying data from one cloud to another. SaaS backup refers to the backing up data created in a SaaS application such as Microsoft 360 or Google G Suite. The factors to consider when choosing backup media: type of data to be backed up, amount of data to be backed up, frequency of backups, cost of backup device and media, security of backup device and media. Now we have the other topic of offsite libraries there. The secondary storage media, usually tape, reels, tape, cartridge, removable hard disk, and cassettes, are stored in one or more physical facility, referred to as offsite libraries based on availability of use and perceived business interruptions risk. Controls over the Controls over the offsite library include both data and software files should be backed on a periodic basis. Encrypt backup media, especially when they are in transit, ensuring a physical construction can withstand fire heat. Locating the library away from the data center, ensuring that only authorized personnel have access to the library, ensuring that the perpetual inventory of all storage media and files stored in the library is maintained, ensuring that a record of all storage media and files moved into and out of the library is maintained, ensuring that the information regarding the contents, versions, and locations of data files is maintained. After that, we have security of offsite facilities. Information processing facility must be as secured as the originating site. Adequate physical access controls such as locked doors, no windows, and human surveillance should not be easily identified from the outside, should not be subject to the same natural disasters that affect the originating site, possesses the same constant environmental monitoring and controlling as the originating site. After that, we have some considerations for establishing backup schedules. Frequency of backup cycle and depth of retention generation must be determined. Backup strategy must anticipate failure at any step of processing cycle. Master files should be retained at appropriate intervals. Transaction files should be presented to uh, coincide with master files. File descriptions need to be maintained to coincide with each version of a file that is retained. Secure the license to use certain vendor software at an alternate site. Backup for software must include object code and source code libraries.
Let's see how many topics are left there. Backup schemes, telecommunication networking capabilities. After that, we have business continuity plan terms and insurance. Okay, there are a lot of their topics are remaining there still. Okay, we are there. Backup schemes. Okay, let's take a break. Small. Let's take a short break there. Okay, let's revise the backup schemes there. There are three main schemes for backup: full backup, incremental backup, and differential backup. The best type of backup scheme for you will depend on specific needs. Usually, the methods are combined in order to complement each other. Full backup. It backups all the data on a system, including all files, folder, applications. Full backups are most time-consuming and storage-intensive system intensive type of backup, but they also provide the best protection of your data. Incremental backup. It backups only the data that has changed since the last full backup. This makes incremental backups much faster, less storage intensive, and full backups. However, you need to have a full backup in place of restore your data if there is a disaster. Differential backup. It backups all of the data that has changed since last full or differential backup. It is faster than full backup, but they are not as fast as incremental backups and they require more storage space than incremental backups. Okay, telecommunication networks and capabilities recovery methods. To maintain critical business processes, business continuity plan should provide the information processing facility for adequate telecommunication capabilities. Communication capabilities to consider include telephone voice circuits, wide area networks, local local area networks, and third-party electronic data interchange. Telecommunication networks are susceptible to the same natural disaster as data centers and also are vulnerable to several disastrous events unique to telecommunications. These disasters include central switching office, disaster cable cuts, communication software glitch, and errors, security breaches connected to hacking, and a host of other human mishaps. The methods of providing telecommunications continuity are redundancy. This involves a variety of solutions, including providing extra capacity, providing multiple paths between routers, using dynamic routing protocols, providing for failover failover devices to avoid single point of failures in routers, switches, firewalls, etc. Saving configuration files for recovery if network devices fail. Alternative routing. The method of routing information via an alternative medium such as copper cable or fiber optics. This method uses different network circuits and endpoints if the normal network is unavailable. Diverse routing. The method of routing traffic through split cable facilities or duplicate cable facilities with different or duplicate cable sheets. Or after that, there's a long haul network diversity. This ensures the long distance access if any single carrier experiences a network failure. Last mile circuit protection. It uses redundant local carrier T1S microwave or coaxial cable accesses to the local communication loops. This enables the facility to have access during a local carrier communication disaster. After this, business continuity plan terms. Sorry, plan teams. Business continuity plan teams. The plan should contain the teams with their assigned responsibilities in the event of disaster. The involvement of following teams depends upon the level of the disruption of service and the types of assets lost or damaged. Emergency management team.
team, also known as incident response team, is responsible for coordinating the activities for all other recovery teams, establishing an emergency operations centers, and handles key decision making. This team functions as disaster overseers, and responsibilities include determine activation of the business continuity plan, handling legal matters evolving from disaster, public relations, and media inquiries, retrieving critical and vital data from offsite storage, identifying, purchasing, and installing hardware at the systems recovery sites, installing and testing system softwares at the systems recovery site, operating from system recovery site, re-establishing the user system network, transporting users to recovery facility, reconstructing databases, supplying necessary office goods, special forms, check stock papers, coordinating systems use, and employee work schedules. Emergency Action Team is a first response team with designed fire wardens and bucket crew to deal with the fire and perform orderly evacuation of personnel and securing human life. Damage assessment team assess the extent of damage after the disaster and calculates estimated downtime. Off-site storage team is responsible for establishing and overseeing an off-site storage schedule and for ensuring that the organization's data is backed up and stored in a secure manner. Software team is responsible for restoring system packages, loading and testing operating system software, and monitoring applications performance. Security team continuously monitors security of the system and communication links and reports any security conflicts. Emergency operations team consists of the shift operators and supervisors residing at recovery sites for management of operations during disaster recovery. Network recovery team is responsible for establishing network and communication routing and access at recovery sites. Communication teams ensure that the organization employees, customers, and other stakeholders are kept informed about disaster and the organization's response. Transportation team ensures that the organization's employees and assets are transported safely and efficiently to the recovery site. User hardware team is responsible for delivery and installation of office and IT equipment to the recovery site. Administrative support system provides clerical support to the other team, and performs accounting and payroll functions. Supplies team is responsible for coordinating with supplier to distribute supplies to the recovery site. Salvage team works to assess the damage, identify the salvageable assets, and plan for their recovery. Relocation teams coordinates the process of moving from hot site to a new location or to the restored original location. Insurance, the information system process insurance policy is usually a multi-peril policy designed to provide various types of IS coverage. Specific types of coverage are available. IS equipment facility, and facilities provides coverage and physical damage to the information processing facilities and on equipment. Media software reconstruction covers the damage to is media, which is the property of the insured and for which the insured may be liable. Extra expenses designed to cover the extra cost of continuing operations following damage or disruptions at the information processing facility. Business interruptions covers the loss of the profit due to the disruption of the activity of the company caused by any malfunction of the IS organization. Valuable papers and records covers actual cash value of the valuable papers and records on the insured premises against a physical loss or damage. Errors and omission provides legal liability protection in the event that the professional practitioner commits an act, error, or omission that results in financial loss to the client. Fidelity coverage covers the loss from dishonest or fraudulent acts by employees. Media transportation provides coverage for potential loss or damage to media in transportation to off-premises information processing facilities. After that, there's a topic named business continuity plan testing.
BCP testing is a process of verifying that your BCP is effective and that it can be implemented in the event of a disaster and can help you identify any gaps or weakness in your business continuity plan. The test should be strive to accomplish the following tasks: verify the completeness and precision of the business continuity plan, evaluate the performance of the personnel involved in the exercise, appraisal, the training and awareness of non-business continuity team members, evaluating the coordination among the business continuity team and external vendors and suppliers, measure the ability and capacity of the backup site to perform switch-type processes, assess the vital records retrieval capability, evaluate the state quantity of equipment of recovery site. Test execution. To perform testing, these test phases should be completed. Pre-test. A pre-test consists of a set of actions necessary to set the stage for the actual test, including transporting and installing required backup equipment, gaining access to the recovery site, accessing recovery documentation, etc. Test. Test is a real action of the disaster recovery test. Actual operational activities are executed to test the specific objectives of the business continuity plan. Applications are failed over data entry, telephone calls, information system processing, handling orders, and movement of personal equipment and suppliers should take place. Evaluators should review staff members as they perform the designated task. Post-test. The post-test is the cleaning up of group activities. This phase comprises such assignments as restoring the applications back to the primary locations, returning all resources of their proper place, disconnecting equipment and returning personal, deleting all company data from third parties system, etc. In addition, the following types of tests may be performed. Let's take a look of it. Desk-based evaluation paper test. A paper walks through the plan involving key personnel in the plan's execution who reason out what might happen in a particular type of service disruption. They may walk through the entire plan or just a portion. The paper test usually precedes the preparedness test. Preparedness test, usually a locationalized version of a full test where actual resources are explained in the simulation of a system crash. This test is performed regularly on different aspects of the plan. Full operational test. This is one step away from an actual service disruption. The organization should have tested the plan well on paper and in locally before and endeavoring to completely shut down operations. Documentation of results during every phase of the test, detailed documentation of observations, problems, resolutions should be maintained. This documentation aids in performing detailed analysis of both the strengths and weaknesses of the plan. Results analysis. It is important to have always to measure the success of the plan and test against the stated objectives. Specific measurements vary depending on the test and the organization. However, these general measurements usually apply. Take a look of these measurements. Timelessness, accuracy, completeness, amount, accuracy, count. Okay. Timeliness. Take a break like timelines. How quickly was the plan activated and executed? Accuracy. Were the steps in the plan followed correctly? Completeness. Were all the necessary resources and personnel available? Amount of work performed at the backup side by IS processing operations and personnel. Accuracy. Accuracy of the step of the data entry at the recovery side versus normal accuracy. Count. The number of vital records in critical systems successfully carried to backup side, what that were successfully recovered can be measured. Business continuity plan maintenance. Plans and strategies for business continuity should be reviewed and updated on a scheduled basis to reflect continuity recognition of changing requirements. The following factors may impact business continuity requirements as the
and the need for the plan to be updated. A strategy that is appropriate at one point in time may not be adequate as the needs of the organization change. New resources, applications may be developed or acquired. Changes in business strategy may alter the significance of critical applications. Changes in the software or hardware environment may make current provisions obsolete or inappropriate. Changes are made to key personnel to their contact details. BCP coordinator. The responsibility of maintaining the BCP often falls on the BCP coordinator. BCP coordinator responsibilities include develop a schedule for periodic review and maintenance of the plan, advising all personnel of their roles and the deadline for receiving revisions and comments, call for unscheduled revisions when significant changes have occurred, arrange the coordinate scheduled and unscheduled tests of the BCP to evaluate its adequacy, participate in the scheduled plan tests, which should be performed at least once per year on the specific dates, develop a schedule for training recovery personnel in emergency and recovery procedures, maintain costs for BCP maintenance activities, testing, training, and updating. I think this would be the last one, audit of BCP. In, uh, in information system auditors task include evaluating the business continuity plans to determine their adequacy and currency by reviewing the plans and comparing them to the relevant standards and regulations, verifying that the business continuity plans are effective by reviewing the results from previous tests performed by both IS and end user personnel, evaluating of site storage to ensure its adequacy by reviewing its contents, security and environmental controls, and inspecting the facility. Evaluating the ability of IS and user personnel to respond effectively in emergency situations by reviewing emergency procedures, employee trainings, and results of their tests and drills. Reviewing the business continuity plan. Following points list the audit procedures to address the basic BCP elements. Reviewing the insurance coverage, obtain the current copy of business continuity plan, sample the distributed copies of the manual, and verify they are current. Okay, interviewing key personnel required for the successful recovery of the business operations, evaluate the security of the offsite facility, evaluate the documented procedures for the initiation of the business continuity effort, determine if all critical applications have been identified, determine if the port site has the correct and compatible version of all system software. Review the list of business continuity personnel, all site contacts and emergency vendor contacts. Interview the personnel for an understanding of their assigned responsibilities in a disaster situation. Evaluate the procedure for updating the manual or updates applied and distributed in a timely manner. Determine if all recovery teams have written procedures to follow. Evaluation of security at the offsite facility. The security of the offsite facility should be evaluated to ensure that it has the proper physical and environmental access controls. These controls include ability to limit access to only authorized users to facility, um, raised flooring, humidity controls, temperature controls, specialized circuitry, uninterruptible power supply, water detection devices, smoke detectors, appropriate fire extinction system. Okay, so the last one is reviewing the alternative processing contract. The information system auditor should obtain a copy of contract with the vendor of the alternative processing facility. The contract should be reviewed against the following guidelines. And which are these guidelines are ensuring that the contract is clearly written and understandable, ensure that the required terms and the conditions to meet all applicable laws and regulations, confirm the organization's agreement with the rules that apply to sites shared with other subscribers, ensure that the tests can be performed at the hot site at regular intervals, review and evaluate communications requirements for the backup site. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सारा सिलेबस अब कंप्लीट कर दिया है ठीक है अब हमारा ये
अगला जो 40% का था, वो भी मैंने विदिन 1 लेक्चर जो है इसको कंप्लीट कर दिया एंड आई नो कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, बट आप इसको थोड़ा स्पीड अप करके देखेंगे तो आप जल्दी देख सकते हैं इसको। जो लास्ट वाला चैप्टर था उसको तो मैंने सिर्फ़ सिंपली आप लोगों के सामने रीड ही किया है। तो चलें जी इस मीटिंग को अब एंड करते हैं। तो आई होप सो कि सब जो है अच्छे से उन्होंने रिवाइज़ किया होगा सारा कुछ और इन मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब पेपर लाज़मी पास करेंगे अपना। चलें जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।